Good morning, everyone. Am I audible enough? Okay. So, how are you all doing? मैं बढ़िया हूँ रजाउल, आप बताइए आप कैसे हैं? Good morning, Raman. How are you doing? Thanks a lot, Razaul, for your feedback. Okay, guys. So, basically, आज का yes, Razaul, Nifty crossed 17,000 barrier, and अभी तो और भी ऊपर जा चुका है 17,000 से भी. Yep, absolutely. So आज का एजेंडा भी कुछ इक्विटी ओरिएंटेड ही है, ठीक है. Today's agenda is equity research. How to do equity research, from where to do, and then how to create an equity research report on it, etc., etc. So all this is the agenda for today, right? So just give me a minute. By then I think बाकी सब लोग जिन्होंने ज्वाइन करना है, hopefully everybody should be able to join also. Let me share my screen and stuff, and then we'll get started. Okay.
Okay. Resolve rules and regulations to open investment advisory firm. Generally, people get registered with the SEBI. So you have to get registered with SEBI as an investment advisor. There are multiple levels to that. Like you can get yourself registered as a research analyst or a portfolio manager or investment advisory thing. तो इस तरीके से आप बेसिकली अपने आप को रजिस्टर करवाते हो और रजिस्टर करवाने के बाद फिर उसके बाद आपकी आगे की स्टोरी शुरू होती है। एंड रजिस्टर करवाने के लिए आपको कुछ एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं, क्वालिफाई करना पड़ता है। एंड कुछ चीज़ों में कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होती है। मतलब जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करते हुए आप अपने आप को सेबी के साथ रजिस्टर करवाते हो। ठीक है, दैट्स द मेन स्टेप टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटर। Okay guys, so let's get started with equity research and analysis and the report writing. Okay, so first and foremost thing I would like to ask you guys is, what do we understand by this term equity? What do we understand by this term equity? Share. Share in what? Yeah. Share किसमें? एक कंपनी में ओनरशिप बेसिस पे you have a share in the ownership of the company. जो भी हम शेयर परचेज करते हैं, that's what, that's an part ownership of the company. That's why it's called a share. So when we are talking about equity, we are talking about ownership, right? We are talking about ownership into a particular company or any organization for that matter, right? So जब हमारी बेसिकली क्या होती है, एक ओनरशिप होती है, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड समथिंग इनटू द कंपनी, तो उस ओनरशिप की वजह से वी गेट इक्विटी राइट्स. नाउ व्हाट डू वी वांट टू डू? We want to do the right research work in order to understand whether we should own a company or an investment as an equity holder or not, right? Acha, why do we have to do the analysis stuff before purchasing some company share or before deciding that I have to invest in equity of something? So before that decision we have to analyze. Why do we have to analyze? That is what I'm asking. What are the risks associated with your ownership stake? What are the risks that you are exposed to? Hmm? It would be really great if everybody can participate, guys. मजा तभी आता है क्लास में जब सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, ऑफलाइन मोड है, सॉरी ऑनलाइन मोड है, लेकिन सब लोग की अगर अटेंशन रहेगी यहाँ पर और सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत मजा आएगा. ऑफलाइन में तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ.
जब तक सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर जाते हैं तब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। ऑनलाइन का गलत फायदा मत उठाओ आप। प्लीज पार्टिसिपेट and please don't get distracted by the things around you. I'm sure that you are in the comfort of your home, which can be convenient yet distracting as well. So I really hope that you guys are not getting distracted by your surroundings, and not, please don't feel at home, please feel at class. Okay. Yeah, we want to analyze firm strategies, and we want to know what the company does, etc., etc. But my question was a little different. This we do, I understand. We will be doing all this. But why are we doing all this? That is what I want to understand. Why do we have to take the pain to research about a company, analyze it, and then prepare its report also? ठीक है ना, कोई भी काम करने से पहले उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में हमारे को पता होना चाहिए. If we are clear about the significance why we are doing this, then things start making sense. Okay, so company may be interested in raising capital or something like that. As investors, ठीक है, तो आपने सही बोला, दो साइड से इसको स्टडी करा जा सकता है. It can be studied from the angle of the investors, as well as it can be studied from the angle of the company who are trying to sell their shares. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है that the company wants to sell its shares, and there can be investors who are interested in buying the shares, right? Absolutely correct, Priyatosh. If we are investing our hard earned money into some companies, right, we must be well versed with the company. We cannot just invest our hard earned money into some XYZ thing, right? We have to have some investments which are safe. We want two things from any investment that you ever do. You want two things. What do you want? You want one, and the most important thing, you want capital protection. ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपके फंड्स के साथ कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए. सबसे पहला रूल ऑफ अ गुड इन्वेस्टमेंट इज योर कैपिटल इज प्रोटेक्टेड. ठीक है, सो यू हैव टू एंश्योर कि जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कैपिटल रिमेन्स इंटैक्ट, और you know, even if it's fluctuating, it's within uh, a bearable limit, not getting out of hands. ठीक है, so capital protection is your first objective. Your second objective is capital appreciation. The people who just focus upon the second objective and not the first objective are the ones who actually lead to deterioration of capital, because they are not managing risk. They are just thinking about the upside.
They are not thinking about the downside. Whereas the professionals first think about the downside and then the upside. Whenever you are taking any trade or any investment for that matter, first you should be aware कि अगर लॉस होता है तो कितना हो सकता है, अगर प्रॉफिट हो सकता है तो कितना हो सकता है. मतलब लॉस से पहले if you are thinking profit से पहले if you are thinking about loss, then you are in the category of professionals, because professionals do that. They think about how much losses can be there, how to protect the capital before they think about capital appreciation, right? So all those stuff are there. And then of course, after capital appreciation also, if we are left with something, we can look for some regular income. Now that totally depends upon the kind of objective that you are dealing with. ठीक है, आपने क्यों इन्वेस्टमेंट ली है वो क्लियर होना चाहिए. Some people are investing, for maybe some regular income. So they must go for something which gives them, some return, as in some interest returns or some dividend returns on regular basis. Maybe that makes more sense. ठीक है. So it can be the case. Now, if you are not looking for some regular income, you are looking for some capital appreciation, आपका object and therefore your approach will be completely different from somebody who is looking for regular income. ठीक है. And of course, it can be that you have a combination of the two. You're looking for both. ठीक है ना. So ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहले तो. ठीक है. जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तभी हमारा आगे काम पर्पस जो है बढ़िया से डिफाइन हो पाएगा. ठीक है. तो इक्विटी रिसर्च करनी है, एनालिसिस करना है विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड. नाउ ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी के साथ साथ, ऑब्जेक्टिव इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव. You are dealing with a market which is inherent and known to carry a lot of risk, right? If you are investing as an equity owner, you are the owner. ठीक है. And as the very owner, you are definitely exposed. You are exposed to all kinds of risks which an owner is exposed to, and therefore there is no guarantee of your return. Is there any guarantee of return to the owner of a company? As an owner, क्या आपको कुछ guaranteed returns मिलते हैं? नहीं मिलते ना. कभी आप ज्यादा भी बनाते हो, कभी आपका कम भी रिटर्न आता है. ठीक है ना. That is part and parcel of the business. बहुत सारे businesses पे hit आया during COVID, right? Many businesses and many businesses actually did not even revive. Some businesses did not even revive post COVID. अभी है ही नहीं वो. कुछ है जो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग सिचुएशन में है. कुछ भी हो सकता है. दे मे बी सर्वाइव, दे मे सर्वाइव, दे मे नॉट सर्वाइव. कुछ बिजनेसेस जो बहुत ही यू नो जिनका रॉक बॉटम बहुत स्ट्रांग था और उनका प्रोडक्ट की डिमांड पे कुछ खास फर्क नहीं आया. ठीक है. वो बिजनेसेस पे इतना इम्पैक्ट कोविड का नहीं रहा.
रहा भी तो बहुत थोड़ा रहा, विच दे वर इजीली एबल टू रिकवर। ठीक है, तो कुछ ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज में ज्यादा इम्पैक्ट आया, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज में कम इम्पैक्ट आया। इफ यू टॉक अबाउट द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, इस पे सबसे ज्यादा बड़ा हिट आया है। ठीक है, विद ऑल द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस एंड फ्लाइट बैन्स एंड टूरिज्म को जो डी प्रमोट कर रहे थे कि भाई जितना आउटसाइड कंट्री विजिटर्स कम आए उतना बेटर है। अब धीरे धीरे द वर्ल्ड इज ओपनिंग अगेन। धीरे धीरे जितनी कंट्रीज में जो भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी वो सब धीरे धीरे अपलिफ्ट हो रही है। तो धीरे अब आप सोचो, 1.5 years, 1.5 years के लिए जो इंडस्ट्री मतलब इतना बड़ा हिट था, जो अपने नॉर्मल कैपेसिटी से काफी कम लेवल पे ऑपरेट कर रही थी, कितने उनके एम्प्लॉयज की जॉब गई होगी, कितने लॉसेस कंपनी ने बेयर किए होंगे, अभी धीरे धीरे अपलिफ्ट हो रही है। ट्रैवल restrictions and all depends upon the COVID thing, whether the COVID thing remains settled or not. अगर कोविड थिंग रिमेन सेटल्ड एंड कोई मेजर वेव नहीं आती है, देन दिस ईजिंग प्रोसेस एंड स्टफ विल कंटिन्यू। ईजिंग पूरी तरह हो जाने के बाद भी आपको क्या लगता है इन कंपनीज को, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से एसोसिएटेड कंपनीज है, इनको कितना टाइम लग सकता है प्री कोविड लेवल्स पे आने के लिए? क्या लगता है, मतलब can you just give some estimate regarding it? Do we have any estimate? Do these companies have any estimate कि इनको कितना टाइम लग सकता है just to get to the pre-COVID levels? Yeah, I mean, we can all just make some rough estimates, but we cannot say with a guaranteed thing कि इतने साल में काम हो जाएगा, है कि नहीं? We never know कि कितना exact time लग जाएगा इन कंपनीज को टू रिवाइव एंड कम टू द प्री कोविड लेवल्स। ठीक है कि नहीं? सो बहुत सारी चीजें रहती है, राइट? एज एन इक्विटी होल्डर वी नीड टू बी अवेयर ऑफ all these kinds of risk that an industry is exposed to, all kinds of risk that a company is exposed to. ठीक है, we have to be aware। ठीक है, अदरवाइज वी विल नेवर बी एबल टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के लिए कि हमारे को हमारी अर्निंग्स पोटेंशियल के साथ साथ रिस्क पोटेंशियल भी पता हो, ये सब चीजों के लिए इक्विटी रिसर्च की जाती है। ठीक है ना? And there are so many firms, there are dedicated equity research companies, there are brokerage houses, there are investment banks with equity research departments, there are portfolio management companies with equity research department. There are so many different forms of companies with these equity research departments, right? And we are here to talk about how, first we talked about why equity research is done. Now we'll be talking about how equity research is done. ठीक है, how equity research is done, and then how a report on it is prepared, and then finally when you are equipped with all the knowledge, you know why, how, when, everything, आपको जब सब clarity आ जाएगी, तो फिर आपके लिए एक टास्क वेट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर आप इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे काम करेंगे हम, और इंडिविजुअली सब लोग एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करने वाले हैं ऑन अ कंपनी ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड डेटा के साथ टू सपोर्ट इट,
and then of course we will define a date जहाँ पर आप सब लोग अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने वाले हो, ठीक है? So that is going to be the whole course of action. Yes, Razaul, absolutely. So, talking about people who do equity research, it can be, segregated into two broad categories. ठीक है? One can be referred to as the institutional category and the other can be referred to as the retail category. If we talk about the institutional category, we have mutual fund houses, hedge fund, insurance companies, pension companies. Now these pension companies, insurance companies also have their funds which they have to invest, and they invest in the financial markets only. So they also need to do equity research before they can decide as to where to invest the funds, from which whatever earnings happen is used to pay the pensions of the people, and in case of insurance, in case anybody's insurance materializes, then pay to that person. ठीक है? So institutional investors can be many who would like to do some equity research. And as far as the retail investor is concerned, retail investor is basically an individual investor. ठीक है? Institutional investor, as the very name is suggesting, it's an institution in itself. Whereas if we talk about the retail investors, those are individual investors. ठीक है? Those individual investors can be just simple people like us with some definite amount of capital, and there can be some HNIs, that is high net worth individuals, right? So these kind of people can be there, either small investor or a big investor, but investing in the individual capacity, not as an institution, can be part of this basically retail category that we are talking about. Okay. So there are so many people who are interested in doing this equity research. Why they are interested, we all know that as well. Now, see, equity research में भी ना आपको दो type के profiles दिख सकते हैं. One can be actually based upon your analysis and research part, जिसको हम research analyst बोल देंगे, ठीक है, जो कि actual में analysis and stuff कर रहा है, ठीक. And there can be trader. Analyst is just analyzing, ठीक है, वो ट्रेड नहीं कर रहा अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे, whereas a trader is buying and selling orders on behalf of the client as well. And a third person can be, the person related to sales, who is trying to sell the products to new clients. So ये तीनों चीजें चलती रहती है, ठीक है ना? Yeah, treasury department is also there, but it's more about the fund management of the organization. Okay, so basically what is going around is research चल रहा है, उस पे trading चल रही है, नए clients attract करने के लिए, लाने के लिए sales का काम चल रहा है. तो ये सब चीजें चलती रहती है in this kind of a department. ठीक है? Equity research से relatable चीजें ही है, and of course uh, this is being done to generate some revenue that can be commission based or a fixed pay. It can be anything as per the arrangement. ठीक है? Okay, so that is one thing. Now moving ahead,
Yeah. So now moving ahead, let's understand basically कि exactly हमारे को क्या मिलता है, इक्विटी रिसर्च कैसे करते हैं, ठीक है? लेट्स कम टू हाउ इट इज डन. उसके लिए सबसे पहले वी नीड टू डिस्कस द डॉक्यूमेंट्स. हैव वी एवर डिस्कस द डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द कंपनी इन क्लास? कभी किए हमने डिस्कस? चलो आज कर लेते हैं. um, जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, उसी को आप बेस लेते हुए अपना इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे. तो जस्ट रिमेम्बर आपको भी सेम काम करना है ऑन अ डिफरेंट कंपनी ऑफ योर चॉइस, ठीक है? तो प्रोसेस अच्छे से समझ लेना. ये प्रोसेस आपने अपने आप ही अप्लाई करना, क्योंकि एक बार आपने मेरे साथ करा, ठीक है, आपको क्लैरिटी आई. बट उसको जब आप खुद से एक बार कर दोगे ना किसी और कंपनी में, तो वो चीज फिर आपके माइंड में बैठ जाएगी. देन यू विल नॉट फॉरगेट इट. ओके. चलो डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले बात करें, एक पब्लिक कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, ठीक है? अ कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. क्यों हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों हम एक प्राइवेट कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आप पूछो, इससे पहले ही मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ. बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल है बहुत, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि पब्लिकली लिस्टेड कंपनी का जो डेटा है, वो सिंस द कंपनी इज पब्लिक, तो वो डेटा भी पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल होता है. तो हमारे लिए बस जो डेटा कैप्चरिंग है वो एट ईज है. इसके लिए हम बेसिकली एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी की रेफरेंस ले रहे हैं, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. सेम काम, सेम रिसर्च वर्क कैन बी डन with respect to a private company. It's just that data capturing, getting the same amount and amount of relevant data can be a little challenging unless and until आप एक प्राइवेट इक्विटी फर्म का पार्ट हो, जो कि आगे प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, एंड देयरफॉर यू हैव क्लाइंटेल जो कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. कंपनीज खुद आकर के आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जेन्युइन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. इन सच सिचुएशंस ओनली आपको बेसिकली क्या बोलते हैं, वो इंसाइट्स मिल सकते हैं, वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है? अदरवाइज एक जेनरिक पर्सन के बारे में बात करें तो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज का डेटा इजीली अवेलेबल रहता है, फ्रीली अवेलेबल रहता है. तो इसीलिए हम उसको उसकी रेफरेंस लेने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है? सो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसे शो करने पड़ते हैं, शेयर करने पड़ते हैं पब्लिक के साथ? सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? सो एज वी नो कि हर कंपनी जो कि पब्लिकली लिस्टेड है, सबसे पहले तो एक एजीएम होल्ड करती है एवरी ईयर. व्हाट इज एन एजीएम? एनीबॉडी? It's annual general meeting, I think. एनुअल जनरल मीटिंग क्यों होल्ड करी जाती है? व्हाई डू वी हैव दीज मीटिंग्स? Tell about future plans and the present achievements done by the company. Right, to basically give an overview of whatever happened during the year, right? On annual basis, it's a meeting with the shareholders that the company has to hold, in which they explain how the year went by, what are their expectation for the upcoming year. It's just like this is schools में एक annual day होता था, schools and colleges में. तो annual day होता था,
हाइलाइट्स ऑफ द ईयर वगैरह वगैरह अपने को पता चल जाते थे, ठीक है। तो वैसे ही एजीएम हो गया, जो कि हाइलाइट्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब हम इस एजीएम में बेसिकली डिस्कस होता है, एंड दिस इज फॉर द शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स के लिए एजीएम होल्ड करी जाती है, राइट। सो एजीएम आया अपने पास, एजीएम के साथ साथ, मतलब रादर एजीएम से पहले ही एक एनुअल रिपोर्ट कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी होती है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है, इट्स बेसिकली एज द वेरी नेम इज सजेस्टिंग, इट्स एन एनुअल रिपोर्ट, it's a report which is issued by the company on annual basis, which tells us about what is happening with the company, which what has happened in the company during the year, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी डिटेल्स होती है। अभी देखेंगे हम ये डॉक्यूमेंट्स, अभी हम देखेंगे। अभी जस्ट हम उनको एनलिस्ट कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। या EGM is emergency general meeting which is held in case of an emergency situation, like some decision has to be made right now which requires shareholders voting, and we cannot wait for the annual general meeting time। अगर हम वेट नहीं कर सकते तब तक के लिए, तो एक इमरजेंसी बेसिस पे भी मीटिंग होल्ड करी जा सकती है टू डिस्कस द एजेंडा, ठीक है। एंड अभी अगर हम बात करें पब्लिकली लिस्टेड कंपनी की, एनुअल रिपोर्ट हो गई, एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, इसके बाद ये तो एनुअल वर्क हो गया जो कंपनी को करना होता है, दैट इज एजीएम एंड द एनुअल रिपोर्ट इशुएंस। इसी के साथ साथ क्वार्टरली बेसिस की भी बहुत सारी कमिटमेंट होती है, क्योंकि देखो ना आप, एनुअली वेट करना, मतलब अगर आप एक एक टाइम सोचो कि अगर एक टाइम ऐसा भी था जब एनुअल बेसिस पे ही रिपोर्टिंग होती थी, तो आपको तो पता ही नहीं क्या चल रहा है कंपनी में फॉर द होल ईयर। आपको कभी इन्वेस्ट करना है, आपके पास एनुअल रिपोर्ट है विच वाज 6-8 months ओल्ड, तो अब आपको उसके पहले के टाइम की तो इंफॉर्मेशन है, बट व्हाट अबाउट दिस 6 to 8 months, यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू इट, ठीक है ना। तो अपने को वो इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो उसके लिए रूल निकाला गया कि क्वार्टरली बेसिस पे इशुएंस होगी, ठीक है। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनीज कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करती है सेबी के साथ, पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। एक क्या करती है वो, वन इज प्रेजेंटेशन, क्वार्टरली बेसिस पे एक प्रेजेंटेशन बनाती है कंपनी, और उसमें वो बेसिकली पूरा बताती है कि ड्यूरिंग द ईयर क्या रहा कंपनी में, सॉरी ड्यूरिंग द क्वार्टर, क्वार्टर के हाइलाइट्स आपको पता चल जाते हैं। फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं कि ड्यूरिंग द क्वार्टर कैसी परफॉर्मेंस रही कंपनी की, उससे रिलेटेड अलग से रिजल्ट्स आते हैं, सारे फाइनेंशियल्स होते हैं उसमें, ठीक है। सो वी हैव द प्रेजेंटेशन, वी हैव द क्वार्टरली रिजल्ट्स, एंड देन after the quarterly results we also have some supporting documents etc, ठीक है। एंड उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कुछ मीडिया रिलीजेस है, कुछ अगर मेजर चेंज आया है, जैसे कुछ कभी भी कोई मर्जर एक्विजिशन टाइप सिचुएशन होती है, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, मीडिया रिलीज भी करना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखनी पड़ती है। तो जो भी मीडिया रिलीजेस एंड स्टफ लाइक दैट कंपनी ने डील किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास इमीडिएट बेसिस पे अवेलेबल हो जाती हैं। एंड उसके बाद लास्टली we also have the earnings con call, that is basically a conference call which is held between the company and its investors, the analysts and everything, and this is also a public document, right? The audio of it or the transcript of it is available
ठीक है। एंड इसमें बेसिकली द मेन जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, मेन people होते हैं, the CEO, the CFO, they are present for the meeting, and there are various analysts with whom who put across a lot of questions to the management, and the management has to answer those questions. ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके हमें पूरे इंसाइट्स मिलते हैं, ठीक है। एंड ये तो हो गए कंपनी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, एंड इंडस्ट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी बहुत सारी मिल जाती है। ऑल्दो अगर हमारे को और ज्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सो देर आर इंडस्ट्री मैगजीन्स एंड स्टफ लाइक दैट, ऑल्सो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आल्सो देयर, so we can consult them. If we are working at a higher scale, we can consult them and ask for their opinion as far as the industry is concerned. So as an equity research analyst, you have to be fully aware of the whole industry prospect as well as the company prospect. दोनों ही prospect को लेकर के we have to be very comfortable, ठीक है। जब इतना रिसर्च आपने किया है, that is not the end of it, that's just the beginning. This is basically the beginning. So before I move forward and talk about the other processes, although we'll be going into the details of all these processes, don't worry. अभी के लिए मैं बस आपको एक पूरा एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या क्या चीजें जो हमने कवर करनी है, ठीक है। फिर हम उनके डिटेल में भी जाएंगे, बट बिफोर आई टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, पहले आई वुड लाइक यू कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह नोट डाउन कर लो, बिकॉज इन पे आपने काम करना है। इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट यू गाइस हैव टू प्रिपेयर फॉर अ कंपनी। अभी कोई अपनी पुरानी एक्टिविटी पेंडिंग तो नहीं रह गई ना, जो हमने पहले डिस्कस करी हो और अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई हो? ऐसी कोई एक्टिविटी है हमारी? मेरे को ऐसा लग तो रहा था, पता है, बट इतने सारे बैचेस होते हैं ना, तो आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड लिटिल कि आपके बैच में था वो या कोई और बैच में था। कौन सी एक्टिविटी थी वो? ये तो आई थिंक वो नेक्स्ट वीक, आई मीन जो नेक्स्ट वीक आएगा तब वो होगी, वो एमएनए वाला जो एक्टिविटी पूरा केस परफॉर्म। राइट राइट राइट, थैंक्स। ठीक है, तो वेरी Ma'am, गुड। यस, ma'am, I have an exam in the next weekend, so how can I do this activity यू हैव योर एग्जाम ऑन सैटरडे और संडे? on Saturday, on Monday next week? उसके बाद दे देना यार। No, ma'am, I have to. मैं आधा दे दूंगा। आधा दे दूंगा? आधा मतलब क्या होता है? Means the forecasting one. नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड दे देना आप। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो पूरा दो ना, आधे का। Because I have to focus for the exam. हाँ, तो एग्जाम के बाद दे दो ना। एग्जाम तो नेक्स्ट मंडे है, फिर उसके बाद का वीक है, उसके बाद दे देना। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक कह रही हूँ मैं। Ma'am, if there is problem, I present in the next Saturday. सॉरी? If there is any problem, I present on the next in this weekend. Next week. There is no problem, but you said that you will be presenting only half of it. So I don't want you to be presenting only half of it. I want you to be presenting the full of it. Be it you deliver it next weekend or next to next weekend because you have some exam. I don't have any problem with that. But जो करो उसको पूरा करो. That is the objective. Yeah, ma'am. Okay, so we have this M&A activity also, ठीक है, and अभी equity research का भी हमारा इसमें ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड करना जरा।
Oh. Okay, so after we have gone through all these documents which we will be going through in some time, ठीक है, आपने रिसर्च कर लिया, ठीक है जी, ठीक है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स भी आपको पता होने चाहिए. Ma'am, can you repeat? I just missed it. I just started saying something. रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नो द कंपनी, टू नो द इंडस्ट्री. ठीक है, कि इंडस्ट्री के बारे में आपको पता हो, इंडस्ट्री का क्या पोटेंशियल है आगे, किस रेट से वहां पर ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, किस रेट से वहां पर ग्रोथ आ रहा है, आगे क्या पोटेंशियल है, उस इंडस्ट्री का क्या स्कोप है, आपकी कंपनी का क्या स्कोप है, कैसा वो अभी परफॉर्म कर रही है, आगे के लिए क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है, क्या उनका कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच है या डाइवर्सिफाइड अप्रोच है, as in they are focusing upon just one product or one line, or they have a very diversified approach, किस stage में वो कंपनी ऑपरेटिव है, इज इट अ स्मॉल न्यू कंपनी और इज इट already full grown company, or it is a company into its expansionary phase, और कंपनी अब ओल्ड हो चुकी है, या वो इंडस्ट्री बहुत ओल्ड हो चुकी है, बहुत मेच्योर हो चुकी है, किस स्टेज में बेसिकली वो कंपनी है, वो इंडस्ट्री है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. फिर कुछ आपकी प्राइम हाइलाइट्स है कंपनी के, या कुछ न्यूज़ है जिसके बेसिस पे कंपनी हाइलाइटेड हुई है, इंडस्ट्री हाइलाइटेड हुई है, कोई भी न्यूज़ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ है, दिस इज एनी न्यूज़, बट नेगेटिव न्यूज़ को हम थोड़ा सा और ध्यान से देखना चाहते हैं, बिकॉज देर इज नो स्मोक विदाउट फायर. ठीक है, फॉर दीज बिग कंपनीज इट इज वेरी इजी टू dilute or get such negative updates about them vanish. It's easy for them, but if there is some smoke, there may be some fire behind it. That is, हो सकता है कुछ उस न्यूज में कुछ ना कुछ ट्रुथ भी हो, इवन इफ लेटर ऑन कंपनी डिनाइड इट और एनीथिंग. तो क्या मतलब कंपनी बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव न्यूज में रहती है, ठीक है, कुछ नेगेटिव न्यूज है जो कंपनी अट्रैक्ट कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें हमारे को पता होनी चाहिए. कंपनी कुछ मतलब बहुत ज्यादा केसेस में इन्वॉल्व है, कोर्ट केसेस एंड ऑल में इन्वॉल्व है, तो भी वी वुड नॉट लाइक टू पार्टिसिपेट इन दैट काइंड ऑफ अ कंपनी, एटलीस्ट फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस. ठीक है, तो इस तरीके से हम रिसर्च करते हैं, कंपनी का बैकग्राउंड चेक करते हैं. ठीक है, रिसर्च करा, वेरी गुड है. इसके बाद एनालिसिस करना है, राइट. तो एक बार आप ये रिसर्च पार्ट भी नोट डाउन कर लो कि रिसर्च में आप किस किस चीज़ों पे फोकस करते हो. फिर हम इसकी आगे की बात करेंगे, एनालिसिस में हम क्या फोकस करने वाले हैं. Ma'am, यस. I have one question. हम्म. What your thoughts and opinion on the auto sector is going down because of because the chip shortages are there. So, Yeah, auto sector is undergoing some what your short. thoughts in the future? How it can cope up with its manufacturing unit? Auto sector is undergoing some structural changes right now, and from short to medium term, the expectation is not very bullish on it as far as the growth is concerned, because they're facing challenges with respect to their raw materials, and facing challenges with respect to their sales also. So अभी थोड़ा सा challenging scenario है उनके लिए short to medium term में. Of course it is expected कि long term में it will be resolved, but for at least short to medium term this challenge is going to be there.
that is what is being expected as of now. because sales are very looking down in the some auto companies. Yeah, I know. Yeah, Yes, because cyclical in nature. It's an industry which is cyclical in nature, and with the overall condition of the economy, Indian economy or world economy in general, it's not getting a very favorable demand right now. So it's cyclical in nature, and it has its own bullish part of the cycle also. It is currently undergoing some bearish part of the cycle. So it's cyclical in nature basically. okay. Okay. So I hope research points आपने note down कर लिए होंगे. Now, once we know from which documents to refer, why we have to research, what we have to focus upon while we research, the next thing which comes up is the analysis part. ठीक है, तो ये रिसर्च करके ये सब कुछ चीजें हमने डॉक्यूमेंट कर ली है, हमने एक अपना ही डॉक्यूमेंट बना लिया है आफ्टर रेफरिंग टू सो मेनी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द कंपनी एंड द इंडस्ट्री. ठीक है, हमने अपना एक डॉक्यूमेंट बना लिया है जहाँ पर जो मेन पॉइंट्स थे उसको हम नोट डाउन करते जा रहे हैं. वी आर यू नो focusing upon certain aspects and preparing our own document, own research report, which is actually the summary of everything that we have researched about. ठीक है, once we are through with the research and stuff, we analyze. So when it comes to analysis part, we are more focused upon the financial analysis, right? Now analysis can be of two categories. Analysis can be quantitative as well as qualitative. ठीक है, it can be quantitative, it can be qualitative. We are primarily focusing upon quantitative, ठीक है, for the simple reason that it is easier to be focused upon. Qualitative में what do we look at? We look at the quality of the management. We look for the quality of the customers. ठीक है, quality of rather satisfaction of the customers. Quality of customers, satisfaction of the employees. Basically everybody who is associated with the company, be it the suppliers, be it the banks who have provided loan to the company, be it the customers, be it the employees, be it the management, be it the owners, उनकी quality कैसी है. मतलब जब हम we focus upon the people who are associated with the company. ठीक है, ideally मतलब ये मैं बात कर रही हूँ आपसे हार्डकोर फंडामेंटल एनालिस्ट्स की, जो कि which are who are dealing with the crores and crores of capital of their clients, and who invest for a good amount of time, and मतलब very influential research firms we are talking about, who take that pain to do all this stuff. तो ये qualitative research and analysis की जो बात हो रही है, this is actually focusing upon on ground, what is happening on ground. ठीक है, so they have these industry visits, they go and visit the company sites, the various offices, they talk to people associated with the company. ठीक है,
and from there they get some insights about how much satisfied or unsatisfied a general person associated with the company is. Because ultimately ना एक मतलब मैंने भी ऑब्जर्व किया है ये, ठीक है, इट मे नॉट हैपन एवरीवेयर, ठीक है, बट एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने भी ऑब्जर्व किया अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से, एंड बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो भी करते हैं, मानते भी हैं, एंड दे इंक्लूड इट इन देयर वर्क, दैट an organization in which people are not satisfied, the future of such an organization is bleak. Because at the end of the day, it's the people who are running the show. The financials can just show you what is the result, but क्या वो result किसी shortcut से बनाया गया result है, या actual में the company has inner strength? वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है जब कुछ एडवर्सिटी हिट होती है, मतलब जब आपको सिचुएशन फेवर कर रही है, ठीक है, समटाइम्स इट्स यू नो एज वी से लक एंड स्टफ, आई डोंट नो, बट कभी कभार क्या होता है, थिंग्स गो वेरी स्मूथ, कभी कभार क्या होता है, एट सम टाइम्स things are rough, like in covid times things were rough for many businesses. Now during this time आपको क्या लगता है कि वो बिजनेसेस जो कि एक्चुअल में वीक थे, बट प्री कोविड अगर सिनेरियो आप देखोगे तो इट वाज अ वेरी वेरी बुलिश काइंड ऑफ अ सिचुएशन इन द इकोनॉमी. आई मीन every industry was booming at that time, March 2020 से पहले, right? It was a very comfortable kind of a scenario generally in the economy. So at that time times were very favorable. तो क्या होता है ना, ऐसे favorable times में even if your business has some shortcomings, you are able to get results on your financials. आपके financials growth दिखा रहे हैं, everything is growing, margins are improving and everything, so it's very very happy situation as far as the output is concerned. But if your product is weak, if your customers are not satisfied, if your employees are not satisfied, what is going to happen when something like covid will happen and challenges will come? Your business will be the first one to get shattered away because you were not strong from within. आपके जो जो results थे वो short lived थे. Long lived results कब होते हैं? जब वो which are backed up by quality. ठीक है ना, आप खुद ही सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके एम्प्लॉइज खुश है कि नहीं है, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि कस्टमर खुश है कि नहीं है, दे आर लाइक कि बस एक बार पेमेंट आ जाए उसके बाद जो मर्जी हो, एक ऐसे एटीट्यूड के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है वो कितना चल लेगी? आज नहीं तो कल अगर किसी भी बेसिस पे चल रही है, मे बी ब्रांड नेम है या कुछ है, आज नहीं तो कल वो ब्रांड नेम भी खराब होगा ना, नो मैटर हाउ मच स्ट्रॉन्ग द ब्रांड नेम वाज, इट विल गेट डैमेज्ड अगर ऐसे ही चलता रहा तो. एंड इवेंचुअली जब डैमेज हो जाएगा तो इररिपेयरेबल डैमेज होगा बिकॉज आपकी क्वालिटी ठीक नहीं थी. क्वालिटेटिव एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट it requires a lot of funds, time and influential position to you know be in that situation जहाँ पर आप actual में इसको implement कर पाओ, ठीक है, and it actually requires a lot of time to do this qualitative research work, but something like that exists and is done. Why it is done, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, ठीक है.
इसको बेसिकली जो है ऑन ग्राउंड रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, इसको बेसिकली एक और वर्ड भी बोला जाता है, दैट इज स्कटल बट, ठीक है. एंड देयर इज सम बुक ऑन इट आल्सो. I am not able to recall the name of the book, but there's some interesting book on it, on scuttlebutt. ठीक है. Okay, so that is about qualitative research work. Now, what is quantitative research and analysis? When it comes to quantitative research and analysis, we are not focusing upon the quality of the results. That is the quality which we were talking about. We are more concerned about the quantities. That is the numbers. ठीक है. तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो भी हमारे फाइनेंशियल्स हैं, as per the income statement, how much profitability is there, is it improving or not, what are the margins that we are enjoying, are they improving or not, etc etc. तो वो सारी चीजें हो गई. या बैलेंस शीट हमारी कितनी स्ट्रांग है, हमारी सॉल्वेंसी कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है, डेट डिपेंडेंसी कैसी है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसी है, वो सारी चीजें बैलेंस शीट में जज किया. फिर कैश फ्लो पोजीशन से हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितने स्ट्रांग है, क्या ग्रोथ है उसमें, आर दे एट पार विद द इनकम जनरेटेड बाय द कंपनी और नॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बेसिकली ये सारी चीजें हम फोकस करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस. So quantitative analysis is just the analysis of the final result of the company. ठीक है. अब आप सिंपली देखो कि अगर let's say for example कोई anybody who is a fitness freak here, कोई fitness freak है क्लास में? फिटनेस फ्रीक नहीं है? अच्छा, फिटनेस फ्रीक नहीं हो, फिटनेस नॉट अ फ्रीक बट लाइक फिटनेस, वर्क ऑन इट, ऐसा कोई है who works for fitness थोड़ा बहुत? ओके, ठीक है. तो अब यू नॉट अ फ्रीक, बट आपने कभी किसी ने बॉडी बिल्डिंग ट्राई किया कभी? मतलब ट्राई किया, सक्सेसफुल नहीं भी हो? हैव यू गाइस एनीबॉडी ट्राइड बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, biceps, triceps and stuff like that? अच्छा, you were attending the session from the gym. but जिम में आप सेशन कैसे सुन पा रहे थे यार? वहाँ तो बहुत शोर होता है एंड डिस्ट्रैक्शन भी होती है. ओके, सो मतलब these bodybuilders, it मतलब let's say there are two people who are standing in front of you, ठीक है? both have really good bodies, right? so by looking at them you feel कि भाई दोनों ही बहुत फिट है, दोनों ही बहुत मतलब they have built their good bodies and shape में है, they are in good shape. ठीक है. बाद में आपको पता चलता है कि एक बंदे ने जो वो बॉडी बनाई थी उसको 4 साल लगे थे उस बॉडी को बनाने के लिए. उसने कोई स्टेरॉइड्स नहीं लिए, उसने कोई शॉर्टकट्स नहीं लिए, कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिए. उसने अपनी डाइट पे, अपनी बॉडी पे काम करते करते धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
उसने वो बॉडी बनाई थी अपनी, ठीक है, एंड कोई शॉर्टकट्स यूज नहीं किए थे, फुल ऑन जो भी प्रॉपर वे होता है अंडरस्टैंड करते हुए बॉडी की रिक्वायरमेंट को, अपनी डाइट की रिक्वायरमेंट को, सब कुछ अंडरस्टैंड करते हुए कहाँ पर क्या मिस हो रहा है, कहाँ पर क्या अच्छा चल रहा है, इम्प्रूव करते हुए, सीखते समझते हुए एक पर्सन ने वो बॉडी बनाई थी, और दूसरे पर्सन ने बनाई थी बाय हैविंग सम सप्लीमेंट्स एंड, मतलब जो क्विक वेज होते हैं सप्लीमेंट्स एंड ऑल के थ्रू खाते खाते उसने वैसे तरीके से बनाई थी, ठीक है। अब फाइनेंशियल्स को देखना इज जस्ट लाइक लुकिंग एट द फाइनल रिजल्ट, वे क्या रहा उस रिजल्ट को अचीव करने का, was it some quality approach to get there, or it was just a mere शॉर्टकट, तुक्केबाजी, शॉर्टकट्स चल रहे हैं बैक एंड पे, किसी को नहीं पता। ये आप क्वालिटी एनालिसिस करने से थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश करते हो, जो कंपनी से रिलेटेड न्यूज या प्रेस रिलीजेस आते हैं या कॉन्फ्रेंस कॉल भी होती है जहाँ पर मैनेजमेंट बात करती है आपसे, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है जहाँ पे मैनेजमेंट बात करती है आपसे, कोई भी पब्लिक इवेंट हुआ जहाँ पर मैनेजमेंट ने बात करी आपसे, you have to try and read between the lines. Like for example, once I was reading some not reading, I think I was listening to some con call of a company. तो वहाँ पर I don't remember कि I was reading the transcript or listening to it, not sure of that, but whatever it is, transcript थी वो, I don't remember the name of the company, but the management seemed to be very arrogant while giving answers to the analyst. I mean, they were giving very straightforward answers and stuff, and the answers इतने खराब नहीं थे, लेकिन if you look at the tone with which the management was addressing these questions, they seemed very disinterested and arrogant in that situation. तो मतलब हम क्या करते हैं कि जब भी हम अपना ये रिसर्च करते हैं, ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस, बिकॉज कोई भी कंपनी आके अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये नहीं बोलेगी कि हमारे में ये कमी है, आपको जो हम 20% की ग्रोथ दिखा रहे हैं वो हमने एक शॉर्टकट से बनाया है जो कि हो सकता है फ्यूचर में ना सस्टेन करे। कोई भी कंपनी आ करके ये नहीं बोलेगी अपनी एजीएम में, अपनी एनुअल रिपोर्ट में, अपने क्वार्टरली रिजल्ट में। अगर आपसे भी पूछा जाएगा, ठीक है, इंटरव्यूज में क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है ना कि ये बताओ कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, वहां पर हम अपनी वीकनेसेस को भी इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो स्ट्रेंथ ही है। Try to play diplomatic at that time, right? Likewise, it is applicable for companies also. We cannot blindly rely upon the numbers. We cannot blindly rely upon these documents. We cannot blindly rely upon whatever the company is saying. That's why we follow the company news also. That's why we follow the companies, any public public placement or any con calls or AGMs etc. तो वहां से क्या होता है, थोड़े बहुत आइडिया लगते हैं, and then of course if you are in an influential position where you can visit the sites, okay, you can visit the site and you can look for qualitative information about the company and how much satisfied the people are, ठीक है, and talking to the customers and everything, ठीक है, कस्टमर भी आपको बहुत कुछ बता देता है, पता है। एक कंपनी जिसके प्रोडक्ट में आपने अगर पूछा 100 लोगों से
And if 70-80% people are satisfied, that means the company must be doing something right. And if you are talking to the customers and उसमें सिर्फ 10-20% लोगों ने ही satisfactory answers दिए हैं, that means the company may be doing something wrong, even if the financials are reflecting growth, but that growth may be temporary, because ultimately the customer is the one who's going to get more results to the company, and if the customer is not satisfied, more results should not be expected. ठीक है? एक सेकेंड होल्ड करना जरा. Okay. So I hope you're getting to understand the qualitative aspect of the research work, right? Quantitative भी करेंगे, and अगर quantitative analysis करने से we are getting some really good insights about the company, we are happy with the results of the company, and if it is backed up by some quality uh, quality feedback of the customers and the employees and everything, मतलब तो वो एक ओवरऑल पिक्चर बहुत स्ट्रांग बन जाती है उस कंपनी को लेकर के कि नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि जो भी क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स रहे हैं those can sustain in the future and maybe even grow, because जो inputs हैं, जो backing है, वो strong है. It's not a temporary fluke which has happened with the company. And it is actually absolutely very true. ठीक है? You just have to be involved in such a business, or even if you're not involved in a business, I'm sure you are involved in a business, even if you are into some job, but the company is into some business only, right? So it is very easy to observe these things. Maybe आप अगर किसी company पे research कर रहे हो, you know somebody working in the organization. Of course, that person may not reveal trade secrets with you, but if you have a good understanding with the person, or if it's on paid basis, then you compensate for the person. At least you can get to know how the company system operates. कुछ कंपनी होती है जो बहुत अच्छे प्रोसेसेस फॉलो करती है, बहुत अच्छे सिस्टम्स फॉलो करती है, और कुछ कंपनीज होती है जिनके प्रोसेसेस ठीक नहीं होते हैं, उनके प्रोसेसेस में ही कमी होती है, एंड देन देयर लाइक कि रिजल्ट नहीं आ रहे बिकॉज आपके प्रोसेसेस ठीक नहीं है. ठीक है? इट्स जस्ट लाइक यू फोकसिंग जस्ट अपॉन गेटिंग समथिंग विदाउट changing something. You cannot get something new if you don't do something better, right? So all this research, all this analysis we put in to get to an understanding of the company, to get to understanding of the industry, and then once we have the understanding, then we want to have the valuation also. ठीक है? तो ये सब करने के बाद अभी भी हमारा रिसर्च खत्म नहीं हुआ है. हमने रिसर्च किया, हमने एनालिसिस किया,
एंड हमने वैल्यूएशंस किए, ठीक है। हमने उस कंपनी के प्रॉपर वैल्यूएशंस बनाए। वैल्यूएशंस के ऊपर हम पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। एंड देन हमारा जो इक्विटी रिसर्च का काम है वो कंप्लीट होता है। मेनी टाइम्स क्या होता है ना, दैट these people are working on one industry only, मतलब आपको एक इंडस्ट्री एलोकेट हो गई, लेट्स से फॉर एग्जांपल एफएमसीजी इंडस्ट्री, तो आप सालों साल तक आप एफएमसीजी पे ही रिसर्च करो, सो यू गेट स्पेशलाइज्ड इन इट, ठीक है। तो एक ही इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो, सीमेंट इंडस्ट्री है, उसी की कंपनीज के ऊपर आपका रिसर्च वर्क चल रहा है, ताकि आपको स्पेशलाइजेशन मिले एंड कंपनी को आपकी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिले। अब आपको वही एक बैंकिंग सेक्टर, अगर बैंकिंग सेक्टर कंपनी को एनालिसिस करना है, तो उसको लेकर के आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, प्रोसेसेस सिमिलर रहेंगे, तो आप कर तो सकते हो, बट एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज आपकी किसी और इंडस्ट्री को लेकर के हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ पेक्युलर पॉइंट्स हो गए। अच्छा, एमएनए वाली एक्टिविटी में आपने वैल्यूएशंस करनी थी उस कंपनी की, Yes, ma'am. है ना, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट में वैल्यूएशंस नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। एमएनए में ही अगर हम वैल्यूएशंस इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये वाली टास्क में हम सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग पे फोकस करते हैं। दैट इज आपको इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी, जहां पर आपको प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस करके एक कंपनी का दिखाना होगा, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने होंगे उसका हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी कर लिया है। लास्ट में मैं एक बार फाइनल पॉइंटर्स भी आपको दे दूंगी कि इन पॉइंटर्स के ऊपर आपने वो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। एंड अभी नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन पिक अप अ कंपनी, और उसके ऊपर जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिस्कस करे हैं, वी कैन गो थ्रू दोज डॉक्यूमेंट्स, सो दैट जब आप अपने एंड पे भी बैठो काम करने, एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करने, तो व्हेन यू फेस दोज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट फॉरेन टू यू, आपको समझ आए कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। एनी सजेशन from your side with respect to the company that we can choose? We take the IT sector. IT sector. Why IT sector? Because it is booming right now. So many things are going. Mm, I mean, everybody is interested in the IT sector. I get a little bored because I'm not an IT person. FMCG is also good. Mhm. If And you have, yeah, do you think that Patanjali would be listed in the in some years? try to कर रहे हैं यार वो लोग. Maybe it gets listed also. Because which is why they acquire the valuation is very good. Hmm. Right. And Okay. Yeah. I have one question out of the context. Sorry for this. That the SEBI has introduced on the 1st September the new margin rules, Mm. but it impacted the trader community because the leveraging is going to be limited in this after the new Mm. margin rules coming. So how this affect the How does? investors? How this affect the investors and the traders badly?
It actually, to be very frank, it actually affects a lot. कैसे? देखो, आप एक बार म्यूट कर लोगे तो मैं, वो Yes, ma'am. थोड़ा सा डिस्टरबेंस आती है। या सो बेसिकली क्या था, पहले ब्रोकरेज हाउसेस आपको बहुत ज्यादा लेवरेज देते थे। दैट मीन्स कि मतलब अभी आप समझो कि अगर आपको बैंक निफ्टी के वन लॉट पे ट्रेड करना है, ऑप्शन सेल करना है या फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, तो यू नीड 1,60,000। पहले के टाइम में ब्रोकरेज हाउसेस अपने अपने लेवरेजेस दे देते थे, यानी कि वो बोलते थे, इंट्राडे की मैं बात कर रही हूँ, इंट्राडे में क्या होता था कि कुछ ना कुछ आपको एक तरीके से बोरोइंग का एक फैसिलिटी था कि आप एक तरीके से ब्रोकर से बोरो करके, क्योंकि आपने सेम डे स्क्वायर ऑफ कर देना है, तो ब्रोकर के साथ आपका एक अंडरस्टैंडिंग है, ब्रोकर ने आपको कुछ लेवरेज दे दिया है, तो आपको मे बी उस 1,60,000 का 30,000 ही मार्जिन चाहिए, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट 30,000 चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए। तो पहले ऐसा था, तो आप सोचो 1,60,000 में आप कितने लॉट्स के साथ ट्रेड कर सकते थे। अगर 30,000 या 25,000 का भी रहा है, तो आप उस टाइम पे 8 लॉट्स आप ले सकते थे इन द सेम कैपिटल फॉर इंट्राडे। अब सेबी ने क्या बोला कि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, अब देखो 1,60,000 किसी बड़े इन्वेस्टर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो उनके पास लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीस का कैपिटल है, उसको फर्क नहीं पड़ता 1,60,000 हो 30 हो, उसको अब फर्क नहीं पड़ता, वो इस लेवल पे आ चुके हैं। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट रिटेल इन्वेस्टर, इफ यू टॉक अबाउट पीपल लाइक राकेश झुनझुनवाला एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु बिकेम वेरी सक्सेसफुल, वो सब लोगों ने इस चीज का बहुत फायदा उठाया है कि उनको मिलता था लेवरेज। तो बट सेबी ने क्या बोला कि लेवरेज मिल जाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लोग अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेड उठा लेते हैं। अब 1.5 लाख में उन्होंने 8-8 लॉट उठा रखे हैं, तो 8 लॉट्स पे लॉस भी ज्यादा होगा, उनको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा, तो इससे नुकसान भी हो जाता है लोगों का। प्रॉफिट आपका 8 लॉट्स के हिसाब से होगा, तो लॉसेस भी आपका 8 लॉट्स के हिसाब से होगा, तो आपको काफी उस केस में उतनी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी होती नहीं है जितना वो ले लेते हैं रिस्क। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए सेबी ने इस रूल को हटा दिया। वो पिछले साल से चल रहा था, पहले 25% पे था, फिर 50 पे आया, फिर 75% पे आया, अब 100% पे आ गया। यानी कि आप इंट्राडे लो या आप डिलीवरी के लिए लो, ये सिर्फ एप्लीकेबल रहता है जहां पर हम एफएनओ ट्रेडिंग की बात करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, चाहे इक्विटी पे करो या इंडाइसिस पे करो, वहां पे Ma'am, ज्यादा इम्पैक्ट है। या but this will not affect so much in options. Usually, this will impact. I think. सॉरी, Is I'm audible? या यू आर। I think this will impact only the future derivative. I think this will not impact so much the options. ऑप्शन सेलिंग में बहुत इम्पैक्ट है सर इसका। ऑप्शन सेलिंग बहुत सस्ती No, होती थी पहले if we for buying for options. बाइंग में, बट बाइंग में ज्यादा रिस्क होता है, ऑप्शन सेलिंग में इतना रिस्क नहीं होता जितना ऑप्शन बाइंग में होता है। ऑप्शन बाइंग में यू हैव टू बी वेरी राइट, ऑप्शन सेलिंग में इवन इफ यू आर नॉट जस्ट, मतलब आप सिर्फ रॉन्ग नहीं होते हो तब भी यू कैन मेक मनी। बट But ऑप्शन बाइंग में इट्स वेरी डायरेक्शनल ट्रेडिंग which happens in option buying. Option buying is not for everybody. That is, there is a right also, no? If we exercise or not exercise in option buying. अरे वो सब थ्योरेटिकल होता है, जब Yes, आप ma'am. एक्चुअल में ट्रेड करने बैठते हो ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन बाय करो ऑप्शन सेल करो, ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं होता आपके पास, ट्रेडिंग अलग ही लेवल की काम करती है। ये सब हम बुकिश नॉलेज पढ़ते हैं, तो ये बुकिश नॉलेज है, एंड प्रैक्टिकली ऑप्शंस में डील करना एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज हो जाती है। तो इसका डेफिनेटली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। अब देखो ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ
मतलब आपने बोल दिया, चलो सेबी ने बोल दिया कि ऑप्शन मतलब कि मल्टीपल लॉट ट्रेडिंग हो रही थी, तो इस वजह से लॉसेस भी मैग्नीफाई हो रहे थे। अब लोग के पास कैपिटल नहीं है तो कम लॉट से ट्रेड करेंगे, लॉस भी कम होगा। बट अब इस थॉट प्रोसेस के साथ लोग ज्यादा ऑप्शन बाइंग प्रेफर करेंगे, जिसमें आपकी विनिंग पॉसिबिलिटी कम होती है। ऑप्शन सेलिंग में आपकी विनिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑप्शन बाइंग। तो लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बाइंग प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें कम कैपिटल से काम हो जाएगा। फिर ये गलती होने वाली है जो कि पहले भी हो रही थी, अब और ज्यादा लेवल पे होगी। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नुकसान क्या होगा कि अगर किसी ने ऑप्शन सेलिंग करी है या फ्यूचर्स में ट्रेड किया है, क्योंकि आपका डिलीवरी में और आपका इंट्राडे में सेम मार्जिन लगने वाला है, तो लोग क्या करेंगे कि डिलीवरी ही ले लेंगे। उसके इंट्राडे में तो हमें पता होता है कि आज ही हमारे को अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। तो अगर हमारा एनालिसिस गलत हुआ एंड हमारा जो हमने जिस डायरेक्शन में सोचा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है, तो हम उसको आज स्क्वायर ऑफ करके तो निकलेंगे, तो मैक्सिमम लॉस हमारा आज का ही है। बट अगर हम उसको ये सोचते हुए कि नहीं भाई, हमने जो एनालिसिस किया था वो ठीक था, आज नहीं तो कल इट विल रियलाइज, हम स्टॉप लॉस नहीं लगाया, हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया, हमने डिलीवरी में रख लिया, हमारा लॉसेस और बढ़ जाएगा। तो मुझे पर्सनली कुछ ज्यादा कुछ एडवांटेज नहीं लगा ये रूल्स वगैरह लाने का, क्योंकि people will prefer option buying, people will go for delivery, which again will expose them to risk. The only way we can reduce that risk, if you're really concerned about the retail investors and want to reduce the risk, instead of doing this, I think having एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती कि इतना ही लेवरेज देंगे ब्रोकरेज हाउसेस, अपनी अपनी मर्जी से जैसे पहले दे देते थे वैसे वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए था। एक स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए थी उस पर्पस को लेकर के। फिर जो इतने फ्रॉड्स और स्कैम्स होते हैं उनको बंद करने के लिए कुछ एफर्ट्स होने चाहिए थे, और कुछ इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए काम होना चाहिए था, rather than simply increasing the margin requirements on trade। मतलब उसमें तो आपने कई लोग को हैंडीकैप ही कर दिया, जिनके पास कैपिटल नहीं है। जिनके पास कैपिटल है वो तो फिर सरवाइव कर जाएगा, बट जिनके पास कैपिटल नहीं है, मतलब पहले लोग 50,000 से भी ट्रेडिंग सीख जाते थे, अब कोई 50,000 से ट्रेडिंग नहीं सीख सकता, एटलीस्ट इन एफएनओ कैटेगरी। उसको चाहिए होगा अच्छा खासा अमाउंट, तब जाके ही वो उसको सीख सकता है, मास्टर कर सकता है उसको। उसको कम से कम 3 से 5 लाख रुपए चाहिए होंगे minimum. Ma'am, Yeah. if we see the bookish language in FNO, it is very different. But if we go in a real world, I think it is totally different. And go to some broker website and see that the trade happens and that's stuck. हाँ, प्रैक्टिकली बहुत चीजें आ जाती है जब हम एक्चुअल में बैठते हैं मार्केट में और सीखते हैं, जो कि बुक्स में कहीं पे कवर नहीं होती है। And I think in this the SEBI rules it's coming, but it will some affect the investor part also. The rules they're difficult to really exit from the part in the positions because the trader is after that it is really shortening very. I'm sorry, but I did not get your question. Is I'm audible? Yeah. I think that it affects somehow on the investor community also. क्योंकि इनको सेल करना मुश्किल हो जाएगा, ट्रेडर कम कम हो जाएंगे इसके बाद। ट्रेडर कम होते हैं या नहीं होते हैं, वो तो देखो लिक्विडिटी तो मतलब वही वही जो लास्ट मैंने स्टैटिस्टिक्स ऑब्जर्व किए थे जब ये रूल इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था, तभी हमने एक स्टैटिस्टिक्स ऑब्जर्व किए थे जहां पर हमने ऑब्जर्व किया था ये ऑप्शन बाइंग और ज्यादा बढ़ गई है, ऑप्शन सेलिंग में कमी हुई थी। ऑप्शन सेलिंग फ्यूचर्स ट्रेडिंग में थोड़ा डाउन गया था, वेयर एज ऑप्शन बाइंग गॉट अप। तो वही चीज है, ओवरऑल कितना वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट आता है दैट ओनली टाइम कैन टेल, कितने टाइम में ये सब चीजें एडजस्ट होती है। वन थिंग इज श्योर दैट दिस थिंग हैज हैपेंड एंड इज गोइंग टू सस्टेन। Retail invest, I think that the big investors are the ones who are going to benefit out of it,
The small investors, I don't think that they're going to get a lot of benefit. मतलब उनको तो आपने हैंडीकैप कर दिया कि कैपिटल है तो आओ, नहीं है तो मत आओ। बल्कि होना चाहिए था एजुकेशन। कैपिटल से पहले आपको एजुकेशन चाहिए होती है, आपको स्किल चाहिए होता है इस मार्केट में आने के लिए। लोगों को लगता है कैपिटल से पैसे बनाए जाते हैं, कैपिटल से नहीं पैसे बनाए जाते, कैपिटल से पैसे गवाए जाते हैं अगर आपका स्किल ना हो तो। ठीक है, तो स्किल्स पे कुछ काम करे तो बात बने। ठीक है, क्योंकि इतने फ्रॉड्स एंड स्कैम्स होते हैं इस इंडस्ट्री में, स्ट्रक्चर्ड नहीं है इसके, इसकी एजुकेशन स्ट्रक्चर्ड नहीं है। सभी के जो एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं वो मोर ऑफ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टर अवेयरनेस, इन्वेस्टर एजुकेशन जैसी चीजें बहुत ही कम है। तो अगर उन पे कुछ काम हो तो कुछ बेटरमेंट हो सकता है एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए। अदरवाइज स्मॉल इन्वेस्टर जिसके पास ना कैपिटल है ना नॉलेज है, वो आएगा ऑप्शन बाय करेगा, लॉस लेगा, चला जाएगा। ठीक है, सो एनी हाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। Sorry for the your times. चलो कोई बात नहीं, आई होप कुछ कुछ नई इंफॉर्मेशन मिल गई हो बाकी सब लोगों को। अभी लेट्स गेट बैक टू वन कंपनी। ठीक है, कोई कंपनी हम ले लेते हैं और उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेट मी सी, हमने एनालिसिस कौन सी कंपनी पे करा था, रेशियो एनालिसिस याद है किसी को? Tata Lex. टाटा एलेक्साई। ओके, टाटा एलेक्साई पे हमने किया था, तो थोड़ा बहुत आईटी ने वहां पर बात करा होगा। अभी तो कोई एफएमसीजी कंपनी सजेस्ट करो। Britannia. ब्रिटानिया, ब्रिटानिया ले या एचयूएल ले? Anything Nestle is also good. एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लेते हैं, ठीक है। एचयूएल ले लेते हैं। एचयूएल के ऊपर अपन ने क्या करना है, रिसर्च करना है। ठीक है, तो अब एचयूएल के ऊपर रिसर्च करने के लिए सबसे पहले अपने को एचयूएल के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आई होप यू गाइस हैव एक्सेस टू द इंटरनेट, राइट? उसी से आप क्लास भी ले रहे होगे। सो वन थिंग आई वुड लाइक यू टू डू इज डाउनलोड अ फ्यू थिंग्स। ठीक है, you have to download first of all the annual report of HUL, the recent annual report of HUL, the recent earnings conference call of HUL, any supporting presentation, recent quarterly results, any media releases, जो भी रिसेंट लेवल पे है, ये आपको कहाँ मिल सकते हैं? ये सारी चीजें आपको इन्वेस्टर कॉलम में मिल सकती है एचयूएल की वेबसाइट पे ही। ठीक है, तो सबसे पहले तो आई विल सर्च फॉर एचयूएल एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, 2020 to 2021 hul.co.in। इफ यू ओपन इट अप, फर्स्ट जो लिंक आया है दैट इज एचयूएल एनुअल रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो इसे डाउनलोड कर लेंगे हम।
ठीक है, once we've downloaded the annual report, उसके बाद HUL की ही वेबसाइट पे hul.co.in में इन्वेस्टर रिलेशन करके एक एरिया है, वहाँ पर आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट भी मिल जाएगी. एंड let me just share this part of the screen with you. So this is what I'm talking about. So we download the annual report and there you can see some other documents, corporate governance document, shareholder and AGM information, share price, quarterly results. If you go, company presentations are also there, right? Recent news is also there, understanding HUL column. So if you go into the quarterly results, we need the latest quarter work, that is June quarter. जून क्वार्टर की प्रेजेंटेशन है, रिजल्ट है, रिजल्ट्स इन एक्सेल है और ट्रांसक्रिप्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस कॉल. ये सारी चीजें हैं रीसेंट क्वार्टर की, सभी हम डाउनलोड कर लेते हैं. ठीक है, तो डाउनलोड ही नहीं हो रही. रिजल्ट्स आ गए, रिजल्ट्स डाउनलोड कर लेते हैं. ठीक है, ऐसे ही एक्सेल, ट्रांसक्रिप्ट, ये सब आपको डाउनलोड करना है. ठीक है, बस एक प्रेजेंटेशन डाउनलोड नहीं हो रही, बाकी सब तो हो गया. किसी की प्रेजेंटेशन डाउनलोड हुई है बाय चांस? तो एक्चुअली अब क्रोम पे एक बार ट्राई कीजिए, आई थिंक मेरा हो गया, प्रेजेंटेशन भी हो गया. अच्छा, लेट मी ट्राई इट.
मेरा तो नहीं हो रहा. रमन, if possible for you, can you share the presentation over the Telegram group? Sure, I'll do. Okay, okay, thanks. Ma'am, Yes, ma'am, in annual report we read the whole or some parts of the annual report to analyze we'll be reading some parts of it. because it is so like Yeah, yeah. Just give me a minute. I'm sharing it. Sorry? Just 1 minute. I'm sharing it on Okay, Telegram. okay, okay, no problem. Yes, I've shared it. Can check. Okay, let me check. Yeah, received. Thank you. Okay, so you should have a presentation, an annual report, quarterly results, and a transcript with you. And there is some Excel file. So 4 PDFs and 1 Excel file should be there with you for this thing. कहाँ से लेनी है, क्या लेना है, अभी तक वो चीज के बारे में बात की है. यहाँ तक सब लोग डन है, सबके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं. रेडी विद द डॉक्यूमेंट्स एवरीवन?
अगर कोई चैलेंज है तो मेरे को बताओ, आई विल हेल्प यू आउट विद इट। किसी चीज में तो कुछ होगा ना आंसर, या तो यू आर रेडी विद द डॉक्यूमेंट्स और यू हैव सम चैलेंज। Whatever is the case, please let me know, please communicate so that we can move accordingly. Okay, so I hope everyone is ready with the documents, right? चलो, अभी हमने इन डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है। इट मे सीम अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे रीड करेंगे, क्या करेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, इन डॉक्यूमेंट्स को हमें कंसाइज करना है इन अ वे कि हम इनको मैनेजेबल तरीके से स्टडी कर सके और आगे फिर इस पे हम एक रिपोर्ट तैयार कर सके। दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव। ओके, सो एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ स्मॉल ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद ये वाला ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल कर लेंगे एंड देन वी कैन फाइनलाइज अ डेट जब हम इस इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट की प्रेजेंटेशंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड हमें एमएनए की प्रेजेंटेशन लेके, उसके नेक्स्ट वीकेंड में बी वी कैन हैव इक्विटी रिसर्च प्रेजेंटेशन इफ दैट सूट्स यू, दैट विल कंक्लूड इन द नेक्स्ट हाफ। ठीक है, so let's have a small break and we'll be working on these documents and making them concise and precise for you. Okay, so see you after the break then.
Okay, guys, so I hope everyone is back by now. Let's resume. So we have to discuss these documents जिसके ऊपर equity research चलता है, होता है, ठीक है? And then finally we'll jot down the various points जो आपको अपनी report में लिखने होंगे, ठीक है? So that's what we'll do today. And before I go on with the documents, एक बार मेरे को याद आ गया है, तो एक बार आपके attendance में ले लूँ, because I may forget later on. लेके खत्म करते हैं attendance and then we'll discuss these documents. तो विदा आपने प्रीवियस क्लास में भी नहीं लिखे आई थिंक कल मैं 10 फिनिश होने के 10 मिनट पहले मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सो आई डोंट नो अटेंडेंस हुई थी या नहीं I think last time पे हुई थी, मैं check कर लेती हूँ. लास्ट क्लास की क्या डेट रही थी? ट्वेंटी नाइन्थ रही थी. ओके, सो 29th की अटेंडेंस मिसिंग है. 28th की लास्ट है हमारे पास, तो आज आप 29th of August and today that is 4th of September की अटेंडेंस एक बार बता दो, ठीक है? सो Abhishek, I think, must be absent both the days. Then we have Aman. Aman, were you present last Sunday also? Aman, are you there? Okay, Aman, I don't think is there अभी. So अभी आज का तो मैं present mark कर रही हूँ. 29th का let's see once we get to connect with him. Next is Bino. Bino is not present today, right? मैं आज के लिए तो absent डाल रही हूँ. Dipanshu, were you present in the last class as well? Last Sunday, were you there or not? अभी वापस नहीं आए क्या ब्रेक से सब लोग? आई थिंक हम लोग मोस्टली 20-25 मिनट का तो लेते हैं तो आज थोड़ा शॉर्ट हो गया अच्छा,
Okay. Okay. User one, what's your good name? Okay. Okay. So Shivangi was present on both the days. Raman, you were also there on both the days? Gitanjali, what about you? I didn't attend the class on Sunday. I was there on Saturday last week. Okay, fine. Yeah, thank you. Okay, thanks. Okay, and then we have Ishant. I don't think he's there. Then Lakshmi, were you there on both the days, today and last Sunday? So आज तो आप हुई, last Sunday आप थे? Okay, thanks. Who's left? Nazneen, you were there on Sunday? Okay. Then Priyatosh, were you there on Sunday? Yes, I was. Okay. Razaul, were you there on Sunday? I was absent on the previous Sunday. Okay. Sanjeev, were you there on Sunday? Shantini was not there. Subhash, Sanjeev and Subhash. So Subhash is not there today as well, right? So Sanjeev has not told about whether he was there on Sunday or not. And Aman and Dipanshu as well. Aman, Dipanshu, if you're listening, were you there on last Sunday? Please confirm. Aman, Dipanshu and Sanjeev. Okay, so let's continue then. Okay, so we have to concise these documents that we are talking about. Okay.
Okay, so I'll just share my screen with you. Let me open these documents. So these are precisely the documents that we are talking about, right? Comprising of the annual report of the company, the quarterly results, the transcript, and these are also the results. This is just the presentation. So basically क्या होता है ना, ये presentation और results में क्या फर्क है कि results थोड़े से सब कुछ include करेंगे, आपके सारे financials include करते हैं, whereas presentations include just the highlights, just the main pointers. ठीक है? So आपको ये presentation पढ़ने में या ये results पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, पता है? बस ये होते हैं छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स. मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एनुअल रिपोर्ट which is like 146 pages, and there are companies who go up to 300, 400 and 500 pages also for their annual report. ठीक है? So these are basically very time consuming. How to cut short the time, how to focus upon the main points. ठीक है? Because जो ये reports है ये regulatory requirements को fulfill करने के लिए बनाई जाती है. And a lot of things in it are just there for the sake of it. They're just there because they have to fulfill some regulatory requirement. So we will not be focusing upon those formality stuff. किस पे आपको focus नहीं करना, कोई भी document read करते हुए you don't have to focus upon the formality stuff. ठीक है? Formality stuff पे हमने बिल्कुल भी इग्नोर करना है. फॉर्मेलिटी स्टफ को वो क्या है वो हम बात करेंगे. एंड सेकेंडली जो अननेसेसरी, ठीक है, कुछ कई जगहों पर अननेसेसरीली कंपनी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे इटसेल्फ एज द बेस्ट. अपनी कह लो focusing a lot upon their strengths, their achievements, etc. We don't have to get carried away from all those information, because these statements are prepared by by the company itself. These reports are prepared by the company itself, and nobody is going to prepare their report card and say, look, I've done bad in maths, right? अपनी रिपोर्ट कार्ड अगर आप खुद बना रहे हो तो डेफिनेटली यू वुड लाइक टू मेक इट द बेस्ट. ठीक है? तो अगर हमारे को इफ यू हैव टू मेक इट द बेस्ट, आप कोई भी एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे ना, आपको कंपनी अच्छी ही लगेगी, गारंटीड है. मल्टीपल एनुअल रिपोर्ट्स आप पढ़ो, आपको सारी कंपनीज अच्छी लगती है. व्हाई? बिकॉज उसको पोर्ट्रे उस तरीके से किया जाता है. We don't have to get carried away by all that stuff. ठीक है? तो unnecessarily अगर ऐसी blabbering हो रही है, we don't have to carried away because of that. And secondly, जो भी formality चीज है उसको ignore करेंगे, practical relevant चीजों पे focus करेंगे. ठीक है? So that is the ultimate objective, that is the filtration process, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपकी eliminate हो जाएगी and reports में, and whatever will be left will be relevant, not formality.
stuff for you, which you should consider while making a decision about the company or include it in your report. ठीक है? सो एनुअल रिपोर्ट में हम लास्ट पे आएंगे. ठीक है? सबसे पहले छोटी छोटी रिपोर्ट्स जो है हमारे पास, लेट्स लुक इनटू दैट स्टफ सो दैट यू गेट comfortable with the whole thing, and then finally we'll go to the longest one, that is the annual report, right? So talking about the presentation, let's see क्या दिया हुआ है HUL ने अपनी presentation में. ठीक है? Okay, so this is what they have written in the front page of this presentation. This is not an ad, this is an appeal to every Indian. Wear a mask, vaccine, keep social distance. So everybody is trying to include, especially the companies which have some related products. They are definitely trying to include these things into their agendas. और इसके बेसिस पे ना उन्होंने प्रोडक्ट्स भी निकाले. अब वो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उनको उस एजेंडा को सपोर्ट करते हुए भी तो दिखाना होगा ना. So this is one thing that they are supporting, and that is what they have highlighted first in this 24-page long report. ठीक है? I'm not going to read everything here. I'll be focusing upon the main things क्योंकि it is actually impossible कि हम another 1 hour 15 minutes के अंदर ये सारी की सारी reports को 100% read कर सकते हैं. ठीक है? ना 100% read करने की requirement है, बट जितनी रिक्वायरमेंट है उसको भी हो सकता है हम 100% रीड ना कर पाए बिकॉज हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट है. नीड अगर लगी तो वी मे कैरी फॉरवर्ड सम एस्पेक्ट्स ऑफ इट टुमारो ऑल्सो. ठीक है? अगर नीड लगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्लास में डिस्कस होनी चाहिए और बाय चांस टाइम कॉन्स्टेंट आ रहा है तो वी कैन टेक इट अप टुमारो ऑल्सो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है? ओके, सो यहाँ पर दिस इज अ सिंपल disclaimer, like some regulatory requirements जो कि वो fulfill कर रहे हैं कि क्या वो कर रहे हैं, presentation किस चीज से related and stuff. Then they are talking about their chairman and managing director संजीव मेहता, and then again कुछ उनके products आ गए हैं, सर्फ एक्सेल, लाइफ ऑयल, ग्रीन टी. Okay, then they go ahead and talk about their operations. So mobility severely impacted in May, recovering sharply. So this is COVID cases versus mobility index, which is getting better. Okay, अभी भी उन्होंने अपनी operations के बारे में बात नहीं की, अभी भी वो base work ही बना रहे हैं अपना. ठीक है? Let's see. I am also reading this presentation, this one, for the first time with you. ठीक है? Rural leading FMCG growth. रूरल में सबसे ज्यादा एफएमसीजी ग्रोथ they can observe in comparison to the urban state. Inflationary pressures continue, that we all know. Fundamentals of growth, the purposeful brands, improved penetration, impactful innovation, design for channel, fuel for growth. Okay. They're focusing upon people, supply, demand, cost, and cash, coupled with the technology. Their execution has become their execution is more agile and more decisive. Care for people. अभी तक उन्होंने अपने रिजल्ट्स के बारे में बात करनी भी नहीं शुरू किया, अभी बस वो अपना बेस वर्क ही बना रहे हैं. Coverage and assortment, resilient supply chain, flexible capacity, inventory closer to consumers, distributed manufacturing, coverage and assortment, effective coverage is there, assortment is there, impactful innovation meeting consumer demand. Okay, these are all the products. Lakme category, quality ones.
Vaseline. Okay, communications, driving, salience. Again, all their products. कितने products है यार HUL के? So many brands fall under HUL only. Vim is also under HUL. Dove is HUL. Pond's is HUL. Lipton green tea is HUL. Okay. Digitized demand capture greater than 10% of the business. So they're exploring new routes, trying to go digital. अब आए वो finally अपनी performance पे. After almost half the presentation is done. So finally they talk about the performance in a challenging environment. 80% above has been business has been gaining relative penetration. 12% domestic consumer growth has been there. Their profits have grown by 10% and their volumes have grown by 9%. Okay. Their vision, their purpose is to make sustainable living commonplace. Vision to be a leader in sustainable business. We will demonstrate how our purpose led future fit business model drives superior performance, delivering consistent, competitive, profitable, and responsible growth. ओके ठीक है जी. अब आपको कहीं पे कुछ नेगेटिव नहीं बताने वाली कंपनी. कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपनी परफॉर्मेंस, अपने प्लान्स को लेकर के बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक साउंड करेगी. 5 strategic choices. Developing our portfolio, win with our brands, lead in the channels, build differentiated structures and capabilities, build a purpose-led future-fit organization and growth culture. ठीक है, they have a diversified portfolio of products. We cannot deny it, and so many brands are part of that portfolio, and they're good brands. Right? So ठीक है, they are saying that we agree with it, we're fine with it. Operational excellence, of course, according to them operational excellence ही होगा. ठीक है जी, no problem. आगे बढ़ते हैं. Ritesh Tiwari, Chief Financial Officer. So they are just mentioning their executives also alongside. Then their domestic consumer growth in terms of amount is 12%, 9% the volume growth. EBITDA margin dekhe to that is around 24%, which is down by 1.1%. BPS 100 BPS, that is basis points, is equal to 1%. Right? So 1.1 110 basis points will be equal to 1.1%. So the margin has declined a little. ठीक है ना? So that is one thing we can notice. So margins थोड़े से कम हुए हैं. They are currently standing at 24%. PAT की बात करें, that is profit after tax. उसकी growth की बात करें, so that is 5%. 5% growth हुई है उसमें, I think. And net profit. Now what is this BEI? Before BEI का full form have they mentioned it somewhere? Not sure BEI को वो क्या रेफरेंस दे रहे हैं. Let me check अगर कहीं कुछ मिलता है अपने को. Not really. It's not a common used jargon. Something made by them only, but they haven't mentioned regarding it because otherwise net profit and PAT would be the same. What's the difference between this and that? Net profit after tax
is basically net profit only. So दोनों में क्या difference है? I don't know. We'll look into their financials also later on. Maybe वहाँ पे अपने को इस पर clarity आ जाए. ठीक है. अब कंपनी ने अपने कुछ EBITDA margin and growth in profit and sales हमें बताइए. Is it good? Is it bad? How will we judge? Good है या bad है? कैसे judge करेंगे हम? बताओ. Volume growth and net profit growth is, they both are growing. So I think it's average. I mean, it's good. How are you calling it average? On what basis? Not on note basis. Actually, EBITDA, which is, I mean, getting down a little bit compared to previous year, but the net profit and volume are getting, I mean, they're growing. So I think we can say it's good. Okay, fine. So And, yeah, and this shows only little information. We can go to the financials. So basically, keep the information is to better understand. okay, okay, fine. So मतलब positive numbers है, which is fine. But is it really good or is it really bad? इसके लिए we need some reference point. ठीक है ना? अब कोई ऐसा तो है नहीं कि 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 मार्क्स में से अगर आपके हम बोले कि 80 आए हैं, तो 80 को समझने के लिए हमें पहले टोटल मार्क्स की जरूरत है. वी नीड सम रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज टू जज. ठीक है. सिर्फ अगर 80 मार्क्स है ये बोल देंगे तो उससे काम नहीं बनेगा. यस एग्जैक्टली नाज़नीन. वी नीड सम रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट के लिए हम 2 रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं. आपके लिए अगर मतलब मार्क्स तो है नहीं, ये कंपनी के मार्क्स तो है नहीं कि 100 इज द मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम मार्क्स, तो उस हिसाब से कितने आए ऐसे तो हम डिफाइन कर नहीं सकते. राइट. यहाँ पर हमें कैसे डिफाइन करना होता है? हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा. आपके लिए क्या रेफरेंस पॉइंट होगा अगर आपको जज करना है अपने आप को, हाउ यू आर परफॉर्मिंग? कैसे जज करोगे? करते हैं हम, इसलिए पूछ रही हूँ. कैसे जज करते हैं हम अपनी परफॉर्मेंस को, अपने आप को, हम जो कर रहे हैं लाइफ के साथ उसको कैसे जज करते हो आप? Yes, comparing with better is the right word. हाँ, we don't compare with the worst, we compare with the better. ठीक है. तो हम कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन 2 चीजों से कर सकते हैं हम. एक हम कर सकते हैं अपने पास्ट के साथ कंपैरिजन, और एक हम कर सकते हैं अपने कंपटीशन के साथ कंपैरिजन, कि जो सेम फील्ड में है उनके साथ हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया और आप क्या कर रहे हो. उस हिसाब से यू कैन जज कि आप अच्छा कर रहे हो एज पर इंडस्ट्री या नहीं कर रहे. ठीक है. तो वो चीज आ जाती है यहाँ पे. तो अगर HUL की जो ये ग्रोथ HUL ने दिखाई है, पॉजिटिव ग्रोथ है, विच इज अ गुड थिंग, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट इज इट वेरी गुड, इज इट एक्सीलेंट, और इज इट रियली नॉट दैट गुड? वो जज करने के लिए अपने को HUL की ग्रोथ को उसके पास से कंपेयर करना ही पड़ेगा, उसकी इंडस्ट्री से कंपेयर करना ही पड़ेगा, एंड देन ओनली वी विल बी इन अ पोजीशन टू कंक्लूड कि ये ग्रोथ डिसेंट है, इनफ है या नहीं है. ठीक है. सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट.
ठीक है, हम ऐसे ही कंक्लूड नहीं कर सकते, कंपैरिजन हमारे को करना पड़ता है, राइट? ठीक है, अपनी बात करें तो हमारे को अपने पास से कंपेयर करना चाहिए। इंडस्ट्री कंपैरिजन थोड़ा बहुत करना भी जरूरी है in order to know whether we are being underpaid or not as per the industry standards. In order to be aware of the industry standards, वो comparison भी जरूरी है, but getting stuck on it वो जरूरी नहीं है, ठीक है? Anyhow, coming again to the presentation, broad based growth across divisions. So उन्होंने अपने divisions की growth बताई है. So their home care business has grown by 12%. Beauty and personal care business has grown by 13%. Foods and foods and refreshment business has gone up by 12%. तो more or less sales growth सभी divisions में similar ही हमारे को दिख रही है. There's not one division which we can say is winning. And then they are talking about the various business segments, उसमें क्या क्या उनके products है, etc., which you can read on your own. Then personal care products में कौन से हैं उनके पास, and then food business में क्या क्या है, all that stuff is there. Then discretionary and OOH less impacted than wave 1. Okay, and what's OOH first of all? Secondly, what are they trying to say? Less impacted than wave 1. Let's see और क्या दिया हुआ है slide में. Out of home. OH I think stands for out of home. So health, hygiene and nutrition, discretionary, out of home things, products that they have. They're saying that it was less impacted than wave 1. Maybe they are talking about this particular quarter. So ये जो recent quarter इनका रहा है उतना impact नहीं इसमें देखा जितना कि wave 1 के time में उन्होंने देखा था. ठीक है, थोड़ा इतना मेरे को अच्छी नहीं लगी इनकी रिपोर्ट ना, बिकॉज जनरली जो रिपोर्ट्स होती है वो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, and थोड़ा मतलब जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर कर रखा है, हेडिंग दे रहे हैं, कुछ किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बार बार इनके प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं बीच में. एक चीज जो मैंने नोटिस करी है जो कि काफी कंपनीज नहीं करती है, यार मतलब बाकी कंपनीज जिनकी मैंने बहुत सारे ऐसे प्रेजेंटेशन एंड ऑल पढ़े हैं, and one thing, yeah, it's not very clear, and again they're coming back to their products and brands. I mean, people talk about their products and brands, but that is a one page thing. कि एक दो पेजेस में उन्होंने अपने सारी चीजों के बारे में बता दिया, and that's it. Then they're talking about their business strategy during the quarter, how did they perform during the quarter, what are the plans for the next quarter. This is what they focus upon generally. But here what we can see is कुछ भी लिखा हुआ है पेज में और साथ में उनके एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो मतलब मेरे को ये फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन से ज्यादा एक एडवर्टाइजमेंट लग रही है. देखो फिर इनके प्रोडक्ट्स आ गए, बिजनेस ऑन वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ. अच्छा, ये बिजनेस इनके ग्रो कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. सेगमेंट परफॉर्मेंस, this may be helpful to us. तो segment performance कैसा रहा है उनका? This 33% is what? It's segment revenue growth, segmental margins. This is revenue growth. What is this 33%? अच्छा, this 33% may be body care का share in the total revenue. 39% for beauty things and 28% for food things.
So out of this business, which comprised of 33% of the total business, 12% growth in revenue was there and margin was 17%. In case of beauty products, it was segmental growth was 13% and the margins was 28%. In case of food, the growth was 12% and the margins were 18%. I think that's what they're trying to say. So this is something relevant. I think apart from this may have some relevance, ठीक है, इसमें कुछ अपने को information पता चली, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने अपने products and brands के बारे में बात कर रखा है, that can be included in our report कि ये company है, इनके ये products है, ये brands है, ये इनके key highlights रहे हैं financials के during the quarter. So these things make sense. फिर ये इनके segments है, इन segments की ये performance रही है. This much information is relevant, but उसके अलावा it was filled with just their advertisement, I feel. Then these are the quarterly results. The quarterly results hai where we can see that the sales have gone up by 13%, EBITDA by 8%, profit before tax went up by 9%, and net profit went up by 10%. ठीक है. Domestic consumer growth at 12% excludes impact of acquisition of Rewash. Okay. अभी यहाँ पर भी इन्होंने PAT BEI mention किया है. Then they have increased it to net profit. What is the difference between the two? Still not clear about it. It's not a common thing. So they should have explained it. It's not a common jargon which is used like PBT we know, PAT alone we know, net profit alone we know. But what's this BEI? They should have explained it. Anyhow, looking ahead, of course, थोड़ी सी again तारीफ है आने वाली है कंपनी की. Let's see if something useful is there. Cautiously optimistic in the near term. Mobility is improving. Our portfolio and capabilities will hold us in good stead. Rural continues to be resilient. Commodities remain volatile and elevated. Our focus is to deliver volume-led competitive growth with the right balance on pricing, consumer-centric innovations, win in high growth channels of e-commerce and general trade. ठीक है, कुछ खास information अपने को नहीं मिला. So more or less, I don't think a lot of information this presentation gave us, except for a few slides which seemed important, which seemed relevant. उसके अलावा आप देख रहे हो कि सब एडवर्टाइजमेंट था. तो बस वो जब आप थोड़ी बहुत ये स्टेटमेंट्स रीड कर लोगे तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा इन स्टेटमेंट्स को रीड करने का. आपको एक सेंस आउट होने लगेगा कि यहाँ पर कंपनी ऐसी तारीफ कर रही है, ऐसे इनकी फ्री की मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट चल रही है, या कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा किया जा रहा है, फॉर्मेलिटी स्टफ है. तो वी विल नॉट बी फोकसिंग अपॉन दो स्टफ. वी विल नॉट बी इंक्लूडिंग ऑल दोस फॉर्मेलिटी एंड एडवर्टाइजमेंट स्टफ इनटू आवर इक्विटी रिसर्च बोर्ड. वी विल वर्क ऑन फैक्चुअल थिंग्स. ठीक है, कंपनी की ओपिनियंस नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी की अपने आप को लेकर के गलत ओपिनियंस या होप्स नहीं होगी, नेगेटिव ओपिनियंस या होप्स नहीं होगी, राइट? सबकी अपनी पॉजिटिव होप्स एंड ओपिनियंस ही रहेगी. So we don't have to focus upon the opinions, the advertisement marketing part or the formality part. We have to focus upon facts and figures and develop our opinion out of it. ठीक है? So that's about this presentation. I hope you got a crux of how a presentation can be, what to focus upon, what to ignore, what to include in your report. I hope that much is clear. And this document, if you go through this document, this gives you the whole, basically the whole financials, जिसके highlights this
statement this presentation was supposed to do. इस presentation का मतलब ये था कि किसी को आपके क्वार्टर के बारे में जानना है तो उसको ये प्रेजेंटेशन पढ़ के समझ आ जाए कि आपके क्वार्टर में क्या हुआ, उसको रिजल्ट देखने भी ना पड़े। बट इनकी इतनी हेल्पफुल हमें नहीं लगी, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी इन्होंने, सिर्फ अपने ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात कर रहे थे ये। विदम यस, वो कहते BEI, so that BEI stands for before exceptional items. बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, ठीक है, थैंक यू रमन। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। So what do we have next? This is their financials, ठीक है, financials है ये, and ठीक है, this is their revenues, their income, their expenses, then profit, right? Then profit before tax, taxes are there. Then they have other comprehensive income. Do you know what this other comprehensive income is there? क्या होता है ये other comprehensive income? Other comprehensive income basically includes some stuff which has to be part of income but cannot be part of income statement. Okay, so I will not go into a lot of details regarding that. As per basically the accounting standards, कोई भी accounting standard आप ले लो, आप IFRS ले लो, Ind AS ले लो, US GAAP ले लो, तो हर accounting standards में एक segment है other comprehensive income का, which includes certain items which are to be included in income so that they can be carried forward to the equity. जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, वो कहाँ जाता है, इक्विटी में जाता है। बट देयर आर सम थिंग्स which should go to equity but which cannot be included into net profit, ठीक है, जैसे some unrealized gains or losses, ठीक है। आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से बन रही है। व्हाट इज अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है गाइस? At the time when that transaction is been incurred, I mean, not on a cash basis. Right. So recording transactions as and when they occur and not when the cash is exchanged. That is basically accrual basis of accounting, right? So accrual basis of accounting के हिसाब से सिर्फ वही चीज इनकम स्टेटमेंट में जा सकती है जो कि ड्यू हो गई हो, जो अक्रू हो गई हो। उसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज है जो क्रू नहीं हुई है बट शुड गो इनटू इक्विटी, वो कहा जाती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाती है, ठीक है। एंड देन गेट एडेड टू द फाइनल प्रॉफिट फिगर व्हिच इज फाइनली ट्रांसफर्ड इनटू द इक्विटी, ठीक है। क्या क्या वो आइटम्स है, स्पेसिफिक लिस्ट होती है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, आई डोंट थिंक इट इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस आल्सो टू टॉक अबाउट ऑल दैट अकाउंटिंग स्टफ, ठीक है। तो ये ऐड करके हमारे पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाती है एंड दिस
finally goes to the equity. अब इन्होंने सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग भी कर रखी है, सेगमेंट की क्या परफॉर्मेंस रही, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में क्या रेवेन्यू रहा, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा रहा, टोटल सेगमेंट के कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। अभी पता है कई कंपनीज क्या करती है, प्रेजेंटेशन में ये जो भी हमने डिटेल्स देखी इस रिजल्ट्स वाले शीट में, कई कंपनीज क्या करती है उन पे रेशियो एनालिसिस वगैरह करके आपको दे देती है प्रेजेंटेशन में। So you can just refer to the presentation and you can have ready-made ratio analysis on the quarterly results of the company. That seems useful to us rather than just stating कि अच्छा ये सेल्स है, इतना ग्रोथ रहा सेल्स में, इतना ग्रोथ रहा प्रॉफिट्स में, ये हमारे ब्रांड्स है, दैट्स इट। ठीक है, तो काफी कम इंफॉर्मेशन दिया है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उनके ऊपर थोड़ा रेशियो एनालिसिस एंड स्टफ चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कुछ बातें तो करी है, बट अगेन आई थिंक इट्स मोर अबाउट द टॉप लाइन एंड द बॉटम लाइन ग्रोथ, सेल्स में कितना ग्रोथ रहा, अर्निंग्स में कितना ग्रोथ रहा, इसी चीज के बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे को इफ यू वांट टू मेक सम सेंस आउट ऑफ दीज क्वार्टरली रिपोर्ट्स वी विल हैव टू डू सम रेशियो एनालिसिस ऑन इट इन द सिमिलर मैनर दैट वी हैव डन अर्लियर आल्सो। ठीक है तो जो मैंने आपको screener.in वेबसाइट बताई थी, वहां से अगर आप डाउनलोड करते हो डेटा, तो वहां पर एक अलग से शीट होती है फॉर क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो हम थोड़ा एनालिसिस, सारे रेशियोज नहीं, लेकिन मेन मेन रेशियोज हो गए, जैसे ग्रोथ रेशियोज हो गया, मार्जिन रेशियो हो गया, सॉल्वेंसी रेशियो हो गया, ठीक है, ये कुछ रेशियोज हो गए, कुछ रिटर्न रेशियो आरओई वगैरह हो गया, तो ताकि हमारे को कुछ कुछ फ्लेवरिंग मिले कि ओवरऑल क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। ठीक है, तो जब आप अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे तो रिपोर्ट में आपको थोड़ा रेशियो एनालिसिस भी करना होगा कंपनी के ऊपर, जो भी कंपनी आप सेलेक्ट करोगे उस पर रेशियो एनालिसिस भी करना होगा, राइट। तो उसमें जो वो क्वार्टरली पेज होगा उसके ऊपर कुछ 3-4 रेशियोज आप कैलकुलेट जरूर करना, ग्रोथ, सेल्स एंड प्रॉफिट, देन मार्जिन, एंड देन योर डेट टू इक्विटी एंड योर आरओई। एटलीस्ट ये 4 रेशियो इसके ऊपर आप करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट मिनिमम ये 4 रेशियोज उसमें इंक्लूड जरूर करना। ठीक है, सो उसके लिए भी आपके पास जो वो स्क्रीनर से आपके पास जो डेटा आएगा दैट वुड बी सफिशिएंट। तो in a way I can say if you have the financial data of the company both annual and quarterly, आपको इस डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट को हम इतना इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं देते क्योंकि ये डेटा हमारे को फाइनेंशियल्स के साथ मिल ही जाता है। वी वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द प्रेजेंटेशन साइड, बट वो इतना कुछ खास वहां पर हमारे को इनसाइट्स मिले नहीं इस कंपनी को लेकर के। ठीक है, 2 documents down, now we are left with the main documents, that is the annual report and the transcript of the company। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्ट क्या है, जो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी उसका समरी नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी उस कॉन्फ्रेंस कॉल में, उसका एक ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाता है और यहाँ पर शेयर किया जाता है, जो मुझे पर्सनली रीड करने में बोरिंग लगता है काफी। तो मैं क्या करती हूँ, आई लुक फॉर सम ऑडियो वर्जन ऑफ इट। कई कंपनीज तो अपने इन्वेस्टर रिलेशन कॉलम में ट्रांसक्रिप्ट के साथ ऑडियो भी रखती हैं कि हम सीधा सीधा उनकी ऑडियो सुन सकते हैं जो भी उनकी बात हुई थी ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है, लेट मी ट्राई टू फाइंड एक्चुअल ऑडियो वर्जन ऑफ कॉन कॉल। आप भी ट्राई करना, ठीक है, अगर अभी आपको मिलती है तो प्लीज लेट मी नो, मैं भी यहाँ पर ढूंढ रही हूँ इसकी, अगर ऑडियो वर्जन अपने को मिल जाए तो बेस्ट हो जाएगा।
I've got something on YouTube. ओके, तो पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल हमारे पास YouTube पे अवेलेबल है, ठीक है? So we can refer to it for for going through the conference call, ठीक है? Let me share the link for the same. Although जब हम चलाएंगे तब एक मैं ही चला दूंगी so that sync रहे. So I think it's gone only to resolve message. Okay, so I have shared the link for the audio of conference call which we will be undergoing, ठीक है? But before we do that, I was thinking कि एक बार annual report भी देख लेते हैं, फिर हमारी सिर्फ कॉन कॉल रह जाएगी. कॉन कॉल में जितना आज कवरेज हो पाएगा ठीक है, बाकी का अगर कुछ बचता है तो कल इसको कंप्लीट करते हुए we'll move forward, ठीक है? ओके, सो एनुअल रिपोर्ट की अभी हम बात करेंगे. एनुअल रिपोर्ट में हमारे को एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और फॉर्मेलिटीज में नहीं फंसना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे फोकस करना है, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एनुअल रिपोर्ट. एनुअल रिपोर्ट में भी आपके पास एक अच्छी चीज है, वो ये है कि आपके पास सारा कंटेंट आ जाता है, ठीक है? तो कंटेंट में कौन से एरियाज है जिस पे हम फोकस करेंगे? ये आंटी क्यों बना रखे हैं यहाँ पे इन्होंने मास्क पहन के? व्हाट आर दे ट्राइंग टू डिपिक्ट आउट ऑफ दिस पिक्चर? कैन यू गाइस इंटरप्रेट समथिंग अबाउट दिस पिक्चर? What is the relevance of this picture here on the front page of HUL? What do we interpret out of it? कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ इम्पोर्टेंस इस पिक्चर का इस कॉन्टेक्स्ट में किसी को दिख रहा है? आर दे प्रमोटिंग वेयरिंग मास्क? Then what does this picture depict? I mean, ऐसे ही तो कुछ पिक्चर नहीं रख देंगे. हाँ, बस वही दिख रहा है मेरे को और तो कोई सिग्निफिकेंस दिख नहीं रहा. बट स्पेसिफिकली इस तरीके से किसी को पोर्ट्रे कर रखा है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? वेयर अ मास्क एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना को तो वो किसी भी चीज से कर सकते थे, किसी को भी दिखा सकते थे यहाँ पर. बट स्पेसिफिकली इस अटायर में इस I mean, it seems like somebody is about to wash clothes. नहीं, यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है मेरे को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा. अगर आपको समझ आ रहा है तो आई वुड लाइक टू लिसन टू योर इंटरप्रिटेशन ऑफ इट.
ओके, चलो भाई, हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। आई नो some things are actually leaving us clueless with respect to this company's presentation. बाकी ठीक है, देखते हैं आगे। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपने को फोकस नहीं करना, क्योंकि वो तो अपन किसी भी वेबसाइट से एक्सेल में ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर रीड करके उनको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, सो वी कैन कम्प्लीटली इग्नोर दिस एरिया। इसमें से जो एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है वो है ये नोट्स। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में क्या फर्क होता है? इज एनीबडी अवेयर द डिफरेंस बिटवीन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंसोलिडेटेड? Ma'am, यस। standalone means the single company and consolidated means the of its subsidiary to combine. That is called consolidated. हम्म, मतलब जितने भी हमारी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर्स है, जितनी भी सारी कंपनीज हमसे एसोसिएटेड है, उन सब का टोटल फाइनेंशियल जब हम बनाते हैं तो इट्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। जब हम सिर्फ हमारी अपनी प्रिंसिपल कंपनी का देखें तो दैट्स अ स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। अपने को कंसोलिडेटेड पे फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट थोड़ा सा हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट। और नोट्स में हम स्टडी कर सकते हैं अगर हमारे को किसी भी चीज की डिटेल्स चाहिए तो, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर आइटम जैसे एसेट्स है, उनकी डिटेल्स चाहिए, क्या है, कितना डेप्रिसिएशन रहा है, क्या मेथड यूज हो रहा है, अगर हमारे को कोई डिटेल्स चाहिए तो वी रेफर टू दीज नोट्स, ठीक है। स्टैंड अलोन वी कैन fully ignore, we can focus upon consolidated, in that we will focus a little bit upon the audit report and the note part, otherwise the balance sheet, pnl, cash flow, ये सारी चीजें तो हमारे को किसी भी वेबसाइट पे एक्सेल पे मिल जाती है, और इस पे हम फिर रेशियो एनालिसिस करते हैं। तो जो भी आप कंपनी चूज करोगे उसके ऊपर रेशियो एनालिसिस आपको करना होगा, जैसे हमने पहले किया था टाटा एलेक्साई पे, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस आप करोगे किसी से भी, आप डाउनलोड करो, याहू फाइनेंस लो, मनी कंट्रोल लो, स्क्रीनर लो, या कोई और वेबसाइट लो, फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू गेटिंग डेटा इनटू एक्सेल एंड being able to calculate the ratios. Okay. So that is one thing. अभी इसके बाद आपका कितना सारा एरिया तो वैसे ही खत्म हो जाता है, राइट? अब आपके पास ये जो अवार्ड्स एंड एवरीथिंग की इंफॉर्मेशन है, this is also you are not very much interested in. A little bit you can just have an overview of this information, but you don't have to go deep into it. Financials को लेकर के रेशियो एनालिसिस कर लेंगे, किसी पर्टिकुलर आइटम की ज्यादा डिटेल चाहिए नोट्स रेफर कर लेंगे, ऑडिट रिपोर्ट थोड़ी बहुत रेफर कर लेंगे, दैट्स इट। यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब बचा ये वाला एरिया, इसमें से व्हाट इज इम्पोर्टेंट, देखो, आपका चेयरमैन मैसेज आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, कंपनी एट अ ग्लांस आप देख सकते हो, ठीक है। तो वहां पर आपको हो सकता है कंपनी अपने थोड़े हाइलाइट्स दे दे, वो हाइलाइट्स हम देख सकते हैं। चेयरमैन की क्या स्टेटमेंट है, चेयरमैन समटाइम्स मेंशंस अबाउट द इंडस्ट्री, द इकोनॉमी, द कंपनी एंड एवरीथिंग, तो वहां पर कभी कभी हमारे को अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो वी वुड लाइक टू लुक इनटू दैट। तो एट अ ग्लांस देख लिया, चेयरमैन स्टेटमेंट देख ली, board of directors and all, that's we don't have to focus upon all that stuff। हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है, कंपनी के हिसाब से उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, वो हम देख लेंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई हमारी विच वी विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? Ma'am, बोलो। I think we have to. The company has to pay the certain amount to the CSR community. That is the Who is the CSR community? who are into the social work like that. हाँ, तो उनको बेसिकली अपने अ, उनके लिए सोशल वर्क के लिए एक एक्स अमाउंट
एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज एंड स्टफ उनको वो डेडिकेट करना पड़ता है अपनी सोशल एक्टिविटीज के लिए। तो पहले इट वाज अ लग्जरी, कुछ कंपनीज करती थी कुछ नहीं करती थी, बट इट इज नाउ कंपल्सरी। कुछ रूल्स है कुछ रेगुलेशंस है जिसके अकॉर्डिंगली ये करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली अगेन ये थोड़ा फॉर्मेलिटी स्टेटमेंट हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। बिजनेस रिपोर्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, अगेन फॉर्मेलिटी स्टफ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? एनीबॉडी, एनी आइडिया? गवर्नेंस क्या होता है? Imagine controlling and managing the whole corporate हाँ, structure of the company. right. So governance is basically something relatable to the government, the rules and regulations of the government. So हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने गवर्नेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि दिस इज एथिकल, दिस शुड बी डन, दिस शुड नॉट बी डन। तो वो सारी चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर आती है। नाउ एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होना एक कंपनी में एक एसेंशियल चीज है, ठीक है, टू मेंटेन द एथिकल सिस्टम एंड टू हेल्प विद द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द प्रोसेसेस एंड एवरीथिंग। तो इम्पोर्टेंट चीज है, नो डाउट। बट एनुअल रिपोर्ट में जो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन बता रखा है, आई एम श्योर बिना रीड करे मैं कह सकती हूँ कि कोई भी अपनी गवर्नेंस के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखेगा कि हमारी कंपनी की जो गवर्नेंस है उसमें ये कमी है। they always, what I have noticed is that they are always trying to pitch in the best points of their governance, right? So इसीलिए मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती ना CSR एक्टिविटी को, बिकॉज इट्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टफ को। आई टेंड टू इग्नोर ऑल द स्टफ, ठीक है। बाकी एक और चीज होती है जो अलग से होती है वैसे तो यूजुअली आई एम नॉट टू श्योर कि इन्होंने किसी और के साथ क्लब करी हुई है। एक चीज होती है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, MD&A। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में बेसिकली मैनेजमेंट टेल्स कि उनका क्या व्यू है on the company's performance and what are their plans for the future with respect to the company, how they see the industry and etc etc, ठीक है। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है। आई डोंट नो, इन्होंने मोस्ट लाइकली वो किसी के साथ क्लब कर दी होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि इंक्लूडेड ना हो, क्योंकि 99% केसेस में आई हैव ऑलवेज सीन दिस स्टेटमेंट देयर। तो हम MD&A पे फोकस करेंगे, चेयरमैन स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे, की हाइलाइट्स एंड परफॉर्मेंसेस ऑफ द कंपनी पे फोकस करेंगे, उनके बिजनेस मॉडल पे फोकस करेंगे, थोड़ा बहुत ऑडिट रिपोर्ट एंड some notes if required पे फोकस करेंगे, एंड दैट्स इट। बाकी जो फॉर्मेलिटी चीजें हैं या मार्केटिंग चीजें, वी कैन कम्प्लीटली इग्नोर देम। तो अब देख पा रहे हो कि भले ही 140 पेजेस का, ये 146 पेजेस का डॉक्यूमेंट हो, बट इसमें से हार्डली 20 पेजेस ऐसे हो गए जो आपके लिए रेलिवेंट हो गए। फाइनेंशियल्स के ऊपर आप सेपरेट काम करते हो जो कि सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। आउट ऑफ दिस 146 पेज, आई थिंक हाफ द पेजेस आर डेडिकेटेड फॉर फाइनेंशियल्स ओनली। और फिर जो बचे 50% है उसका 25% फॉर्मेलिटीज में निकल जाता है, एडवर्टीजमेंट या ऐसे ही निकल जाता है, और 25% जो होता है ना वो हमारे लिए रेलेवेंट होता है, जो कि ना एडवर्टीजमेंट होता है, ना फॉर्मेलिटी होता है, ना फाइनेंशियल्स होता है, जो हमारे को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडस्ट्री एंड द कंपनी बता रहे हैं। तो हमारा टारगेट क्या है? टू गेट टू सम इंफॉर्मेशन विच इज एक्स्ट्रा
for the company and the industry. ठीक है, तो वो टारगेट है हमारा. लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी इस कंपनी में हमारे को क्या इनसाइट्स मिलते हैं. ठीक है, ये पूरा नहीं इंक्लूड किया हुआ क्या? We can't view this part of the अच्छा ठीक है, we have this thing. ठीक है, चलो let's start with it. At a glance, what does the company has to say? As India's largest fast-moving consumer goods company, we are driven by our purpose to make sustainable living commonplace. Over 85 years of heritage, 4,500 distributors, 8 million stores sell our products. 1,150 suppliers are there, 14 brands in India's top 100 most trusted brands as of 2020, and 14 brands with turnover of over 1,000 crores. Over 50 plus brands help people feel good, look good, and get more out of life. Okay. अब ये starting point है where the company starts to talk the best out of itself. मतलब जो best चीजें होगी ना कंपनी की, आपको फर्स्ट पेज ऑफ एनुअल रिपोर्ट में हमेशा वो बेस्ट चीजें दिखती है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अच्छा, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट their turnover, their turnover growth, and their net profit growth, which is 18% as per them in this year. जो हमने पहले देखी थी वो क्वार्टरली थी, ये एनुअल है. So on annual basis, this company has shown a growth of 18% in their turnover as well as net profit, which was around 12% in 1920. But one thing is strange. How can the company's turnover growth and net profit growth be the same in 2021 also and 20 also? मतलब उस साल भी 20.12% का ये सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ क्लेम कर रहे हैं, और 80 और अब भी 18% का ये प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दोनों क्लेम कर रहे हैं. ऐसा बहुत ही रेयर चीज लग रही है मेरे को, क्योंकि जनरली इट इज डिफरेंट. थोड़ा सा स्ट्रेंज नहीं लग रहा आपको? यू गाइस थिंक इट्स स्ट्रेंज? Ma'am, I think the turnover is changed by 2%. Profit growth is changed by net profit growth is changed by 12%. 2%, 19, 20. What is this 18% that they have mentioned? Reported turnover growth, they say 18%. Then उसके नीचे लिखते हैं 2019 to 22%. 2% से 18% इतना चेंज आ गया सेल्स ग्रोथ में 1920 से 2021 तक. ऑडिटर डज द ऑडिटिंग रिपोर्ट, रमन. बट मेरे को ये बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है कि अगर 2% का इनका सेल्स ग्रोथ था 2019 टू 20 वाला जो ईयर था, जिसके सिर्फ एक क्वार्टर में थोड़ा बहुत कोविड का इम्पैक्ट रहा होगा, उसमें 2% का ये ग्रोथ बोल रहे हैं, एंड दैट 2% has gone up to आई 18%. थिंक ये स्टैंडअलोन इन्फो है ये, एंड वो अच्छा, आई थिंक कंसोलिडेटेड तो नहीं. मे बी दैट कैन बी द रीजन. मे बी. ठीक है, बट 2% और 18% में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है ना. ठीक है, स्टैंड अलोन है, दैट इज फाइन. चलो लेट्स नॉट वेस्ट आवर एनर्जीज ओवर स्टैंड अलोन डेटा. देन कंसोलिडेटेड मिलेगा तो उस पर देखेंगे.
डिविडेंड्स दिए हैं कंपनी ने फॉर श्योर। डिविजन्स इनके पास 3 है, ये सब आपको अपने मेंशन करना है अपनी रिपोर्ट में। कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट्स है, क्या डिविजन्स है, क्या ब्रांड्स है, कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या रेशियो एनालिसिस आपने किया है, क्या न्यूज़ है, ये सब कुछ आपने इंक्लूड करना है। ठीक है, सो एंड इट्स अप टू यू हाउ मच details you want to mention. So they have these 3 businesses which we already know. ठीक है, उनमें क्या क्या आता है, उनके क्या रेवेन्यू इबिट रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, देन कम्स द चेयरमैन्स मैसेज। अब इसको मैं थोड़ा सा क्विकली रीड करूँगी क्योंकि दिस कैन ऑल्सो बी वेरी लॉन्ग, ऑल्दो इतना भी लॉन्ग नहीं है, एक ही पेज का है, बट स्टिल। तो बेसिकली एज पर द चेयरमैन Mr. Sanjeev Mehta, we have been able to bring down the curtains on the financial year 2020 to 21 with a robust set of numbers. We reported a turnover of 45.311 crores. Okay. So we know that there has been challenges due to COVID, etc., which got disrupted the movement in the supply chain, etc. People's health was at risk and everything. And then we had to protect our financial model. आप later on अच्छे से भी पढ़ सकते हो, मैं सिर्फ की points यहाँ पर read करने वाली हूँ, ठीक है, because limited time है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा they're talking about the growth and everything which हमने पहले भी देखी थी। So according to them, they have managed COVID challenges well, and they were able to declare a final dividend of 17% per share, and total dividends that they are going to pay is going to be 9,500 crores. एक साल का dividend है, बाप रे। Last year, significant change in what consumers buy and where they shop, online and all का system जो आया, उसको लेकर के कंपनी ने अडॉप्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, उनके सोप बिजनेस काफी अच्छा करने लग गया। दे बिकम द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन दिस situation. They started focusing upon those stuff. They launched 15 new product variations in the hand hygiene portfolio within just 30 minutes. So 30 days, sorry. So they tried to capture this situation. Of course, they tried. ठीक है, सैनिटाइजर से लेकर के सोप से लेकर के जो लिक्विड सोप्स एंड ऑल होते हैं, उन सब पे काम किया इन्होंने। एंड देन व्हाट, अच्छा, they launched some products for surf excel and stuff also, vim also, मतलब they keep doing that, right? प्रोडक्ट इनोवेशन, थोड़े बहुत वेरिएशंस इधर उधर, कुछ ना कुछ, चाहे पैकेजिंग में हो, मार्केटिंग में हो, एडवर्टाइजमेंट में हो, या कोर प्रोडक्ट में हो, कुछ ना कुछ उन्हें करना पड़ेगा। बिकॉज यू नो इट्स एट द एंड ऑफ द डे, ये जो पूरा इनका बिजनेस मॉडल है उसमें दे हैव टू फाइट द कंपटीशन। बिकॉज अगर एक सोप की भी बात की जाए तो लाइफ बॉय भी एक सोप है, तो लक्स भी एक सोप है, या कोई और ब्रांड भी एक सोप है। तो उसमें डिफरेंशिएशन कैसे लाई जाए, हाउ टू बीट द कंपटीशन, how to get a competitive edge in such a competitive industry, and then maintain and improve our brand value। इस पे इनको काम करते रहना पड़ेगा थ्रू आउट देयर जर्नी। ठीक है ना, अगर ये इस पे काम करना छोड़ देंगे तो इनका बिजनेस गया। बिकॉज कितना भी अच्छा ब्रांड क्यों ना हो जाए, अगर आपने अपने बिजनेस पे काम नहीं करते रहे हो कंपटीशन को मीट करने के लिए,
जो चीजें चाहिए उनको उनके ऊपर अब काम नहीं करते रहे हो, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल it's gonna go away, right? So they're talking about Domix and its campaign, which was held by them, and they say that it contains some formula proven to kill COVID within 60 seconds, coronavirus within 60 seconds. ठीक है, cleanliness and everything उनसे related products पे काफी focus किया, which is something we know also. We just got confirmed by reading this report. Okay, then they are talking about the food brands. Food brands continue to focus on providing healthy options. Our tea business saw a significant rise in the market. तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो अपनी रिपोर्ट में भी इंक्लूड कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू देयर वेरियस बिजनेसेस, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, व्हाट देयर फोकस इज, ठीक है, which product they are focusing, which areas they are focusing. So we expanded our fortified food range and launched Hellman's mayonnaise, okay, and Kisan peanut butter and stuff like that. तो product आते जाते रहते हैं इनके और भी किए, and we partnered with Swiggy and Zomato also to ensure favorite ice creams are delivered to the customers. Okay. They try to go virtual during the lockdowns and stuff. New future food to support healthier and more sustainable global food system. Okay, across our supply chain and sales, our top priority was the safety of our people and of those who work with us. Our B2B app Shikhar enabled our retail partners to place contactless orders conveniently, and now we have over 5 lakh retailers ordering through Shikhar. ठीक है. We made significant progress in our sustainable agenda. We reduced CO2 emissions per ton of production by 91% compared to 2008 baseline. We collected and safely deposited more than 1 lakh tons of post-consumer use plastic waste since 2018. ठीक है. So how they are helping the environment, they're talking about all that stuff here in this paragraph. Then Unilever Sustainable Living Plan paved the way for the new Unilever uh, Compass commitments that were announced this year. Okay, okay, nothing great. Ecosystem and stuff, growth fundamentals. आई थिंक बाकी सब फॉर्मेलिटी स्टफ लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो हमारे को मिली है वो है विद रिस्पेक्ट टू their main areas on which they are focusing upon. They are focusing a lot upon their food business and um, the hygiene, health and hygiene care products. तो यहाँ पर इनका मेन फोकस जा रहा है और गया है ड्यूरिंग दिस टाइम्स, एंड दे हैव स्टार्टेड विद द शिखर ऐप so that people, the retailers can order in from there, and आइसक्रीम्स को लेकर के भी इन्होंने कुछ ऑनलाइन सिस्टम डाला था. So these things they have done. Okay, and moving ahead, this is the team basically. And then they are talking about the highlights of their performance. So as they say, home care comprises of the maximum part of their revenue. Then comes the beauty. Sorry, it seems like beauty is a little more segmental revenue wise. Beauty and personal care
have a little more contribution to revenue. Then we have home care, then food, and then others. Okay. This is basically the non-financial performance they are trying to include into these statements to show how companies taking care of quality stuff also, rather than just the financial stuff. Okay, this is the segmental results for the various segments. कुछ खास दिखे तो बताना. रेवेन्यू EBITDA उनमें क्या ग्रोथ रहा, थोड़ा बहुत वो सब चीजें बता रखी है. कुछ खास इन्फॉर्मेशन मुझे लग नहीं रही है. वैसे भी हम बैलेंस शीट एंड ऑल हम दूसरी जगह से लेने वाले हैं, यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं. इसके बाद इंडिया सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स हाइलाइट्स, उन्होंने क्या क्या किया ये आप रीड कर सकते हो लेटर ऑन. आर स्ट्रैटेजी, आर विजन, ये सब आपकी रिपोर्ट में होना चाहिए. ठीक है. I'm not reading them out because you know this is a straightforward reading thing. In case कोई प्रॉब्लम आती है किसी को तो definitely I'll help you out. But जो एकदम plain reading stuff है उसको मैं rather not discuss it here so that we can save some time of the class. ठीक है. तो ये सब आप read कर सकते हो. And फिर ये कुछ जेनरिक बातें बोल रहे हैं क्या करना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यस, दिस मे बी इम्पोर्टेंट फॉर अस इफ दे हैव गिवन सम गुड इनसाइट्स अबाउट द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो ये चीज हम रीड कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है. व्हाट डू वी डिपेंड अपॉन? वी डिपेंड अपॉन रिलेशनशिप्स, पर्पसफुल पीपल, ट्रस्टेड सप्लायर्स, कॉम्पिटिटिव कमिटेड पार्टनर्स. ठीक है. So that's what they say, that we are dependent upon. सबसे पहले लोगों पे डिपेंडेंट है जो हमसे जुड़े हैं. what we do, consumer insights, we track changing consumer sentiments through our people data center, combining social listening with traditional consumer research. That mask lady presents sales. How can you elaborate it a little, Raman? How is it representing sales? रिदम एक्चुअली अभी वो एक पिक्चर आई थी तो उसमें आई थिंक सेल वाला, हाँ अभी आपने शायद किया तो स्क्रॉल तो वो वहाँ पे मे बी. अच्छा. हाँ जी, ये यहाँ पे 7 नंबर. मे भी हो सकता है, बट मतलब how that lady is helping them with sales. Maybe yes, diversified consumer base that they have. It's all guesses that we can do, right? Because कुछ clarity से company ने दिखा नहीं रखा. मतलब company is trying to use some pictures and everything and make a dull a dull annual report, because annual reports are usually dull. अगर वो कुछ graphics and कुछ pictures and ये सब चीजें नहीं include करेंगे तो बहुत ही dull statement है वो, कोई भी सो जाएगा. तो it's a way through which company is trying to make the black and white world of these reports colorful, थोड़ा और clear हो जाते और कुछ relevant दिखा देते, मतलब than just a woman or something like that. तो थोड़ा और clear दिखा देते तो बढ़िया रहता.
Okay, so if we look into other things, they're working on innovation, consumer insights, consumer use, marketing, sales, manufacturing, sourcing, logistic. We know all this is part of their business. I mean, it's because we are familiar with FMCG products, इसलिए हमारे को ऐसा लग रहा है. Had it been some other industry, like अगर कोई IT industry का ले लेते, अगर हम कोई कंपनी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को इतनी फेमिलियर एंड लाइक नोन नहीं लगती, राइट. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. ऑल्सो हमने एक ऐसी इंडस्ट्री पिकअप करी है जिसके बिजनेस मॉडल से हम बहुत फेमिलियर है, तो हमारे को यहाँ पर कुछ नया नहीं लग रहा. ऑल्दो दिस बिजनेस मॉडल शुड बी इंक्लूडेड इन आवर रिपोर्ट. ठीक है ना. तो हमने बिजनेस मॉडल इंक्लूड कर लिया विच इज सिंपल एज यूजुअल एज पर द इंडस्ट्री. ठीक है. बाकी ये इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में बेसिकली कुछ अगर कुछ मेजर कुछ अपॉइंटमेंट्स वगैरह है या डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड ऑल है, तो वो सब चीज़ें कंपनी यूजुअली इंक्लूड करती है यहाँ पर. ओके, सो आई आई डोंट सी अ पॉइंट कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है. I don't see a point in doing that. If you have a lot of extra time, you can think about it. But I would ignore all this stuff. Okay, because all this is formality. I've already tick marked the things which I think are important. बाकी ये सब चीजें अभी फॉर्मेलिटी चल रही है. डिविडेंड्स एंड ऑल कंपनी ने क्या दिया है, क्या प्लान कर रही है, वो सब चीजें इम्पोर्टेंट है, वो हम देख सकते हैं. उसके अलावा corporate governance and stuff like that, they're just done for formality's sake. ठीक है. आउटलुक हम थोड़ा देख सकते हैं. if they have provided anything with respect to the outlook they are discussing. So the year 2021 saw unprecedented disruption to lives and livelihood across the world, and India was no exception. The economy declined sharply during the first half of the financial fiscal year as the country grappled with the pandemic. However, effective measures taken by the Government of India and the Reserve Bank of India helped the Indian economy to recover. A rapid rollout of vaccines, coupled with this and that and those, was helping stuff out. The trajectory of the pandemic still remains unpredictable to a very large extent, with country already witnessing a second wave. Our overriding priority remains therefore to protect lives and livelihoods. We've already demonstrated our ability to navigate through such a volatile and uncertain external environment, being well placed to deliver the needs of our multiple stakeholders. We remain watchful of the situation while focusing upon the driving volume led competitive growth. Even though conditions will remain unpredictable and we will be living with the effects of COVID-19 for some time, we remain confident of the medium to long term growth prospect of FMCG sector. Our people have shown their resilience and commitment to rise in the most difficult circumstances. With our strong portfolio of trusted brands, industry leading capabilities, resilient workforce, and a clear compass strategy guiding our decisions, we are well placed to deliver consistent, competitive, profitable, and responsible growth. Okay, that's their outlook. Fine. Nothing to explain, I guess. Um, we can just ignore all this stuff. Annexures are there to support it. If we've ignored the report, annexures are not that relevant for us. One thing is relevant for us is the shareholders patterns, like who owns what. तो स्क्रीनर में आपको वो भी मिल जाएगा, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो अपनी रिपोर्ट में. इसके बाद
कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एंड स्टफ, ये मैंने आपको पहले ही बोला था दैट यू हैव टू इग्नोर इट. जैसे ये इनका शेयर होल्डर्स है कि किसने कितना परसेंटेज ओन कर रखा है, ये आपको स्क्रीनर से भी मिल जाता है, ये यहाँ पे मिल जाता है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. शेयर होल्डिंग पैटर्न आपकी रिपोर्ट में होना चाहिए. ठीक है, वो एक चीज हम इंक्लूड कर सकते हैं. इसके बाद ये आपके फाइनेंशियल्स आ गए. एज सेड बिफोर, फाइनेंशियल्स हमें लेना देना नहीं है. ये नोट्स आ गए. नोट्स में स्पेसिफिक आइटम अगर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो लेना देना है, नहीं तो नहीं है. ठीक है, तो वो सारी चीजें आ जाती है यहाँ पर. आई थिंक इसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं. मोर और लेस यही सब चीजें होती है. ठीक है, chairman's message हो गया, management discussion हो गई, their forecast and stuff like that, their main highlights, their main products, their main view, their main focus, किस प्रोडक्ट पे वो फोकस कर रहे हैं, क्या उनकी बिजनेस मॉडल है, क्या स्ट्रैटेजी है, ये सारी चीजें बेसिकली अपने को लुक फॉरवर्ड करनी होती है एक एनुअल रिपोर्ट में, एंड नॉट द फॉर्मेलिटी स्टफ एंड एडवर्टाइजमेंट स्टफ. ठीक है. सो गाइज आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया लगा है एनुअल रिपोर्ट में. बाकी ये पहली एनुअल रिपोर्ट है. आई एम श्योर आप जब अपनी एक और एनुअल रिपोर्ट पे स्टडी करोगे, एक और कंपनी पे जब स्टडी करोगे, तो डेफिनेटली आपका जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ उनसे आप और ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे. ठीक है, अभी एक काम करते हैं, आज के लिए इतने करते हैं, क्योंकि किसी भी मोमेंट पे क्लास अपने आप बंद हो जाती है. ठीक है, तो बेटर है कि हम ही टाइमली कंप्लीट कर लें, एटलीस्ट हमारी बात तो कंप्लीट हो जाएगी. तो अभी एक काम करते हैं, लेट्स कीप इट एट दैट टुडे. कल हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में सबसे पहले आपका एक कॉन कॉल रहता है, कॉन्फ्रेंस कॉल. तो उसको भी एक बार मैं आपको ब्रीफली एक बार थोड़ा आइडिया दे दूंगी उसका, कि उसको हम कैसे टेक केयर करते हैं एंड स्टफ. तो एक बार कॉन कॉल का मॉर्निंग में देख लेंगे, और उसके बाद एक बार कॉन कॉल का हो जाए तो फिर हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, बिजनेस स्टोरी बोर्ड एंड स्टफ, वो सब हम कल करेंगे कंटिन्यू. ठीक है, एंड कल ही एक बार डिसाइड कर लेंगे. मैं आपको एक फाइनल लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी इंक्लूडेड इन योर इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट एक बार कल मैं दे दूंगी वो, एंड देन वील डिसाइड अ डेट फॉर द डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटेशन एज वेल. ठीक है, सो ये सारी चीजें हम कल करते हैं. आज के लिए इतना ही रखते हैं. I hope you got some idea regarding what documents we refer, why we refer them, how to segregate the important significant part from the formality marketing part. I hope you got some insights over that. Let's meet tomorrow and continue. Okay, thank you for the time. Take care. Bye bye. Thanks guys. Bye bye.